But having said that, abhi the market is broadening up, so people have realized a lot of new startups are trying to build for this problem. But at the core of all this, there is still unawareness to the retail janta who's still not clear what to do. So even today, if you have a random conversation amongst 10 people, everyone wants to know what's the next hot thing, right? कि आज किस में डाले जिससे पैसा बहुत बढ़ जाए. So before getting into all of this, I think understanding of asset classes is also important, right? फेस टू फेस के वीडियो नंबर 222 में आपका स्वागत है. आई होप यू गाइज हैव सीन यस्टरडेज वीडियो. कल का वीडियो अगर आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा तो पहले वो देख लीजिए, फिर इसके बाद आइए. बिकॉज कल का वीडियो नहीं देखेंगे तो आज के वीडियो में मज़ा नहीं आएगा. कल का वीडियो देखा होगा तो आपको याद होगा साकेत से हमने इंट्रोडक्शन लिया था और साकेत की जो ITC की जर्नी है उस पर हमने काफ़ी समय बिताया था, क्योंकि हम सबको ITC से बहुत प्यार है. Having said that, Saket, extremely young, motivated, passionate investor. Now you're a fund manager now. Yes. Yeah? Now he is a fund manager. So what a lovely journey. तो आज हम इनसे सीखेंगे बहुत डीप जाके कि अगर हमको खुद अपना फंड मैनेजर बनना है तो हमको क्या करना चाहिए. वो कहते हैं ना, खुद मेरे स्वर्ग नहीं मिलता है. तो आज ये हमको सिखाएंगे कि कैसे खुद बड़ा पैसा अपने लिए हम बनाएं. हाउ टू बिहेव लाइक अ फंड मैनेजर ऑन आवर ओन. All your Saket, and we have students here who are willing to learn from you in depth. Chali. Great. So I think the first thing that you should do is, if you want to become your own fund manager, or how we've titled this video, your own asset manager, is the whole concept or the whole idea behind doing this video is कि ये आपको एक अच्छा framework देगा. Although हमेशा we'll always say कि you rely on experts or you rely on people who do this, but at the same time if you're starting from scratch, a lot of times क्या होता है कि जो expert आपको recommendation दे रहा है, या you could have your advisors or wealth managers, it's important to understand कि वो जो कह रहे हैं, is it the same thing that you want, or is it the best fit for you? और ये तभी हो सकता है जब आपकी understanding about this gets better, and which is what the whole objective of today's video is. So typically, we talk about the fact that who exactly is this high net worth individual in India? इसका threshold क्या है? Now loosely, people use some parameters, but if you go on Google and if you search, typically anyone in India, because our per capita income, if we compare in the global scheme of things, is low. It's close to $2,400 per capita. So anyone who has more than 5 lakh rupees in India to invest is a HNI. अच्छा साकेत, मैं ना क्वेश्चन बीच में बहुत बिल्कुल बहुत बुरी आदत है. तो कुछ मेरे को कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी आपसे पूछने पड़ेंगे. बिल्कुल, ठीक है. बिल्कुल. जैसे पर कैपिटा इनकम है, इट्स अ वेरी लूजली यूज्ड टर्म. बिल्कुल. तो इसको थोड़ा डिफाइन कर दिया, मतलब क्या होता है इसका. और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है जानना, क्योंकि क्या है कि a lot of times हम क्या करते हैं, we'll come across some article या come across some infographic कि भाई नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन तो US में $180 है, इंडिया में $200, तो बहुत ग्रोथ का स्कोप है. या ये चीज़ यहाँ इतना महंगा है, यहाँ इतना सस्ता है, तो ये ग्रोथ है. या इंडिया में 8 करोड़ डीमैट अकाउंट्स है, हमारा पार्टिसिपेशन इन इक्विटी मार्केट्स इज एट ये, ग्लोबल में ये है, तो ये है. बट ये डिस्पैरिटी क्यों है? एट फर्स्ट हैंड वी हैव टू अंडरस्टैंड कि डिफरेंट कंट्रीज आर इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ देयर इकोनॉमिक लाइफ साइकिल. ऐसा हो सकता है कि इंडिया आज जो कर रहे हैं वो चाइना 20 साल पहले कर चुका हो, या वो US 30 साल पहले कर चुका हो. तो उनके जो इनकम लेवल्स है, या उस देश का जो टोटल आउटपुट है, वो हमसे थोड़ा बेटर है, या वो हमसे हाई है. तो GDP पर कैपिटा की अगर हम बात करें, सो इट्स जस्ट कि इस एक देश एज अ होल कितना आउटपुट कर रहा है, अगर हम उसको मेजर करें इन टर्म्स ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर मेड. देयर आर डिफरेंट वेज टू कैलकुलेट इट, बट द सिंपल कॉन्सेप्ट इज कि देश का आउटपुट क्या है, उसको अगर हम नंबर ऑफ पीपल से डिवाइड करें तो उससे आता है GDP पर कैपिटा. ओके. तो एज अ थ्रेशोल्ड, बिकॉज हम एक ग्लोबल कंपैरिजन कर रहे हैं, तो इंडिया का GDP पर कैपिटा इज क्लोज टू $2,200-$2,400 एज ऑफ नाउ. US वुड बी एट $68,000-$70,000. तो ऑलमोस्ट एक 30x का डिफरेंस है बिटवीन व्हाट इंडिया पर कैपिटा इनकम इज वर्सेस व्हाट US पर कैपिटा इनकम इज. सो अब
यहाँ जब हम इस कॉन्टेक्स्ट में इसे डालें तो एज अ रूल ऑफ थम इट इज सेट कि $2,000 तक जीडीपी पर कैपिटा टेक्स केयर ऑफ थिंग्स. तो रोटी कपड़ा मकान $2,000 तक सॉर्टेड है. अच्छा. 2000 के बाद आता है डिस्क्रेशनरी कंजम्पशन, विच इज वाई टुडे यू सी इन इंडिया देयर इज दिस बिग बूम. चाहे हम लग्जरी वॉचेस की बात करें या पीपल टुडे आर बाइंग स्नीकर्स विच आर वर्थ लाइक मोर देन 60,000-70,000 rupees a pair. Why is this happening? Because suddenly our basic needs are taken care of. We are looking at a generation that is now going to come, that is now going to aspire for things. Because if you look at our parents or our grandparents, they had to really you can say fight to survive. Survival needs are now taken care of, security needs are taken care of. So now comes like this big the whole consumption boom that we are talking about. तो ये हुई जीडीपी पर कैपिटा वाली बात. और आज जो हम ये थ्रेशोल्ड देख रहे हैं 5 lakhs, 5 crores, 25 crores, maybe in the next 10 years ये थ्रेशोल्ड भी 5 lakhs will become irrelevant. So maybe this 5 lakhs become 5 crores, right? So that is basically the context, or 50 lakhs without like not getting into a lot of hyperbole. So the idea is India में जब लोग बात करते हैं हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स की, HNIs की, जैसे हम IPO में भी एप्लीकेशन करते हैं तो एक रिटेल कोटा होता है, एक HNI कोटा होता है. So what exactly is this HNI, right? Now HNI is actually high net worth individual or HNWI. So to understand कि net worth क्या होता है, we'll get to it in a bit. Okay. But मोटा माटी as a rule of thumb, it's कि मेरे पास surplus अगर 5 लाख रुपए हैं इंडिया में और मैं वो इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, this is money that I don't need for my needs, for my groceries, for my utilities, then I am an HNI. Okay. But typically आप देखिएगा when we see who's catering to what, you will see wealth managers will want to have a customer which has more than 1-2 crore rupees. तो वो ऐसे loosely it's defined कि 5 लाख plus HNI है, 5 crores plus very HNI है, and 25 crore plus ultra HNI है. So today if we see, अब वो लोग इंडिया में थोड़ा मतलब obviously the number is very small. मुश्किल है निकालना. हाँ, मतलब ऐसे if you want to correlate it with tax returns filed and उससे you will get a number, but टैक्स रिटर्न कहाँ फाइल करते हैं लोग सही नंबर? I mean we are talking about the real economy, right? Real economy वाले. अच्छा. So that way I think the pool is very small, but in the grander scheme of things, but again this pool is what India today is building for. Okay. चाहे हम if we तो ये जो है करेक्ट, ये किधर की तरफ मोटा होगा अब ज्यादा आने वाले? I think बीच में there'll be a bulge in between. अच्छा. And then it'll be like this. अच्छा. तो ऐसा हो जाएगा कि ये 5 lakh moves to 5 crores maybe in 10-15 years. Okay. And you will see there's a big bulge in between. तो ये 5 to 5 CR वाला जो bracket है, that's gonna be like really huge. So मोटे होने वाले. So आज के डेट में what is the problem statement or what exactly is the problem that a lot of times that's what we were talking about. People ask us questions or you get these random DMs that hey, I have this much money, what do I do with it? Correct. So there is already an ecosystem which is in place. ऐसा नहीं है कि इंडिया underserved है या लोगों को आइडिया नहीं है कि क्या है. So आज अगर एक टिपिकल 5 लाख प्लस ब्रैकेट की बात करें तो उनको इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर सर्व करते हैं, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर सर्व करते हैं, या पीपल डू अ DIY एडवाइस कि मैं ऑनलाइन चला गया, मुझे किसी ने कहा यार तुम रेगुलर प्लान नहीं मत लो, तुम डायरेक्ट प्लान लो, इससे कमीशंस बचेंगे, तो मैंने वो कर लिया. सॉरी, रेगुलर मत लो, डायरेक्ट लो, तो उससे कमीशंस बचेंगे, तो मैंने स्विच कर लिया. अब किसी ने कहा नहीं मल्टी कैप में मत डालो, स्मॉल कैप में डालो, तो मैंने वो भी कर लिया. तो ऐसे करते करते 20 people are going to talk about 20 things. And investing is something which I've always believed is not a zero-sum game. It's a positive-sum game. It's a market where a value investor can also thrive, a growth investor can also thrive, a momentum investor can also thrive. So it's important to understand कि आपका क्या outlook है और आपकी thinking कैसी है. And then you can kind of put yourself into that bracket कि हाँ, this is something that ties to my philosophy. So I am happy to commit to this advice or I am happy to know more about this person. So that should be the approach. तो आज अगर हम इस construct की बात करें, जैसे हमने ये define किया है the HNI categories. So 5+2 ये में there are these people. 5 crore plus की बात करें, so you have relationship managers. Typically you will have a demat account with a broker and then he'll try to push you products. And अगर 25 करोड़ प्लस की बात करें, so you will have private bankers, wealth managers. Today India has a lot of independent wealth outfits.
something like, let's say, a Nuvama Wealth, as well as there are these bank-led wealth outfits. So Kotak Wealth is pretty big in India. IIFL, it's now rebranded as 361. So you have these wealth outfits that cater to the top tier ultra HNIs of India. But having said that, abhi the market is broadening up, so people have realized a lot of new startups are trying to build for this problem. But at the core of all this, there is still unawareness to the retail janta who's still not clear what to do. So even today, if you have a random conversation amongst 10 people, everyone wants to know what's the next hot thing, right? कि आज किसमें डाले जिससे पैसा बहुत बढ़ जाए. So before getting into all of this, I think understanding of asset classes is also important, right? Which brings us to why we need to know this. We'll get to a few examples what has happened recently. जैसे अभी, there was this whole rage. We saw baseball cards in US selling for north of $500,000. हम ये US की बात करें, अगर हम इंडिया की भी बात करें, तो आज स्नीकर्स का बड़ा क्रेज चला है, राइट? कि ये जूता खरीद लो 1 लाख रुपए में, इसे तुम पहन लो साल भर, और उसके बाद भी देयर इज अ रीसेल वैल्यू. तो रीसेल में ये 1.5 लाख रुपए में भी ये जूता बिक रहा है. सो पॉइंट ये कि एवरी टाइम देयर विल बी अ न्यू एसेट क्लास, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको हर पार्टी में जंप करना है. आज से अगर हम 1-2 साल पहले की बात करें, NFTs were all the craze, which was like, this is the future. एक digital collectible खरीदते हैं. तो I remember Jack Dorsey's first tweet, who happened to be the erstwhile founder of Twitter. उसकी एक NFT थी जो $2.9 million में बिकी थी. अब वो $2.9 million, मतलब ऑलमोस्ट 24 करोड़ रुपए में उसकी ट्वीट की NFT बिकी थी. मतलब कोई कैश दिया था ना? अब that was the value at which it happened. It could have happened in crypto or it could have happened in some other currency. Not too sure about it, but अच्छा, क्योंकि ये भी हवा की बात थी और करेंसी भी हवा वाली. So अब जब वो वापस रीसेल हुई, because NFTs का कॉन्सेप्ट था कि over time इसकी वैल्यू बढ़ेगी, there'll be a resale market. तो I think it got sold for less than $4. So ऐसा नहीं है कि हर बार जो चीज़ हॉट है हमें उस पर जंप इन करना है. At times it is okay to let go of things. जैसे अभी थोड़े दिन पहले venture debt was also doing a lot of rounds in this whole segment, because ये क्या होता है? It was a new asset class that had come in. तो अब venture debt, which is why it's important to understand it. Now venture debt was being sold as a fund. अब venture debt क्या है? There are people who are doing it. There's Trifecta Capital, there's Strides Ventures. तो इनका ऑब्जेक्टिव ये है कि we are gonna raise money from people like you and me, and we are gonna fund startups with that money, and we are gonna give startups debt. अब अगर हम इसको एकदम bare bones सोचे, I am trying to give debt to a company where I don't know what the path to profitability is, right? तो typically अगर आज if you as a company want to raise debt, you can go to a bank and raise it. Now the fact that bank might not तो मांगेगा, बोले घर दो, बिल्डिंग दो, घर मांगेगा, बिल्डिंग मांगेगा, so that's a collateralized loan. Bank will want some underlying security. But having said that, today unsecured credit is also growing. ऐसा नहीं है कि अब आपको भी आज, let's say as a company, you can still get unsecured credit from bank. But bank also has a risk tolerance level, correct? Right? तो which is why जब हम venture debt की बात करें as a concept or as an asset class, there is a degree of risk involved. Yeah. But problem ये because there's a fund to sell and there's a target to be met. Risk की बातें, a lot of people, it gets lost in the conversation. So what happens is, people look कि देखो ये तो fixed income return है, इससे आपका 13-14% बन जाएगा. So why don't you commit money to this? Now I have nothing against these people, but as an underlying concept, as a retail investor, now one can always argue this product is for ultra HNI people. हाँ, मतलब ये रिटेल को थोड़ा. हाँ, रिटेल को नहीं है, but all I am saying is, it's a matter of time, right? आज कि रिटेल भी पैकेजिंग हो जाएगा. Correct. आज अब जैसे at some point PMS was something which was accessible to people more than 50 lakh rupees. अगर किसी के पास है, you can invest in a PMS. बरोबर. आज उसी का एक bite-sized, you can say, product is small case, right? So as a registered investment advisor, you can have a small case, and a retail can participate in that. तो 50 लाख का टिकट साइज आज 5 लाख हो चुका है. बट देयर पीपल हैव सम अवेयरनेस कि म्यूचुअल फंड ऐसे काम करता है, PMS ऐसे काम करता है. तो more or less the concept is the same. But because this was a new asset class, I thought it was worthwhile to have a discussion on it. And
प्रॉब्लम ये है कि it's important to understand what the risk is. At the end of the day, you're still lending money to someone which has not yet made money. And as collateral, you could say कि मेरे पास उस कंपनी का स्टॉक है या मेरे पास उस कंपनी के शेयर्स है या वारंट्स है. But if the company shuts shop, that's a possibility which is there in private markets, and we've seen multiple examples of that. Then that warrant or that share is worthless. Which is why it's important to understand कि आप public markets में जितना हो as an investor, because it's efficient, it's fairly regulated, काफी depth, and these are things that we'll talk about कि why there is a case for us to look at equities beyond other asset classes. ठीक है. So पहले तो हमने बात कर ली कि क्या नहीं करना है और what the problem statement is. अब आ जाते हैं how do we एक बात बताइए, ये म्यूचुअल फंड के अंदर में इक्विटी होता है और डेट होता है, ठीक है? बिल्कुल. 45 लाख करोड़ का मार्केट है जिसमें 20 लाख करोड़ इक्विटी है, बाकी डेट है. जी. मैक्सिमम लिक्विड फंड होंगे बाकी में, विच इज कॉर्पोरेट. तो जब बंदा डेट फंड में इन्वेस्ट कर रहा है तो वो उस रिलायबिलिटी से इन्वेस्ट कर रहा है कि वहाँ पैसा नहीं डूबेगा. राइट. बट केसेस हुए हैं जहाँ पर डेट फंड में भी पैसे डूबे हैं, तो वो भी तो इक्विटी एक तरीके का. तो मैं क्यों करूँ डेट फंड में इन्वेस्ट, 7% रिटर्न कमाऊँ जब इक्विटी मेरे को 15% देता है? No, that's a fair point, and we'll cover that. अच्छा, वो है. हाँ, ठीक है, बिल्कुल ठीक है. we'll cover that, and I think more than returns, it's important to understand about risk. तो हम इस point पे highlight करेंगे, and we'll get to it in a bit. In fact, I think we should just get into it, and then maybe we can get back. हाँ, आगे से पीछे आएंगे. Yeah, चलिए. बिल्कुल. हाँ. So see, this was something that we've learned, ever since, and left में if you see the graph, ये ग्राफ है जो बचपन से a lot of people have seen, right? कि आप जितना रिस्क लोगे उतना आपको रिटर्न मिलेगा. And this is actually a part from Howard Marks, who happens to be a legendary investor, a value investor. तो उसने अपने मेमो में भी ये चीज़ बहुत डिटेल में कवर किया था. तो हम उसका एक इंडियन वर्जन आज we'll try and cover, and we'll educate people about what exactly is he talking about. So if I end up taking more risk, I will always make more returns, right? Then why am I taking the risk? So the idea is, अगर हर बार ज़्यादा रिस्क लेने से ज़्यादा रिटर्न बन रहा है, तब तो उसमें रिस्क है ही नहीं. ओह अच्छा, ठीक है. बिकॉज बचपन से अगर हमें यही बताया गया है कि हम जितना रिस्क लेंगे उतना रिटर्न बढ़ेगा, तब उसमें रिस्क ही नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि रिटर्न तो ज़्यादा मिलनी ही है. बट what Howard Marks argues, and he actually argues against this graph, he said, while this is a graph we've all seen, but the way to interpret this graph is actually on the right. कि at every level of risk, your range of outcomes increases, which means, and these range of outcomes can be both on the positive and the negative side. तो अगर हम इस कर्व को देखें, at a smaller end of the risk reward curve, there's actually very less risk to reward, right? तो एकदम अगर हम लेफ्ट में देखें कि चलो अगर मैं फॉर एग्जाम्पल एक FD में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे पता है कि मुझे 7% एक अश्योर्ड रिटर्न मिलेगी सब्जेक्ट टू अ 5 लाख इंश्योरेंस लिमिट बाय RBI. बट उसका डाउन साइड क्या है? आई माइट लूज ऑन इन्फ्लेशन. अगर कल को इन्फ्लेशन रन्स वेरी हॉट, मे बी टुमारो एवरीथिंग गोज अप बहुत फास्ट, 10% इन्फ्लेशन हो गया, सो आई एम लूजिंग मनी देयर इन अ ईयर. सो टिपिकली इन इंडिया इन्फ्लेशन हैज बीन इन द रेंज ऑफ 6 to 7%. अगर FD 7% रिटर्न दे रहा है तो ठीक है, मुझे पता है अपसाइड मेरा ज़्यादा नहीं है, बट डाउन साइड भी ज़्यादा नहीं है, बिकॉज इन्फ्लेशन को मोर और लेस वो बीट कर दे रहा है. थोड़ा अगर हम एकदम एक्सट्रीम एंड में आए, राइट एंड में, सो लेट्स से आई एंड अप पुटिंग मनी इन क्रिप्टो. अब मुझे पता है कि ये 10x हो सकता है, बट ये 0 भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, राइट? तो आई कैन ऑल्सो लूज माई कैपिटल अगर मैं लेवर ट्रेड्स क्रिप्टो में चालू कर दूं, या मे बी आई कम अक्रॉस सम ऐप जो कुछ कॉपी ट्रेडिंग कर रहा है या फॉरेक्स में कुछ कर रहा है. देयर आर ऑलवेज दीज एक्सोटिक थिंग्स दैट कम टू यू विच ऑलवेज लर यू कि बॉस मैं तो डेली 5 लाख रुपए कमा रहा हूँ या मैं डेली 10% कमा रहा हूँ. सो दीज आर थिंग्स विच पीपल शुड लुक एट विथ कॉशन. मतलब एक बार आपको एक शंका होनी चाहिए या एक स्केप्टिसिज्म होनी चाहिए कि वाई इज इट सो गुड टू बी ट्रू, बिकॉज इफ समथिंग इज सो गुड टू बी ट्रू, देयर इज अ हाई चांस इट्स नॉट. सो ही एक्चुअली आर्ग्यूज कि आप एकदम एक्सट्रीम एंड में आ जाओ तो यू कैन एक्चुअली एंड अप लूजिंग योर कैपिटल, एंड दैट्स वेयर द प्रॉब्लम स्टार्ट्स. तो अगर हम एसेट क्लासेस की बात करें, fixed deposits would be something which could be at the extreme left, and crypto would be something which would be at extreme right. अब हम within asset classes थोड़ा घुसते हैं. So let's say अगर हम debt की बात करें, you brought it up कि within a debt fund also something can end up losing my money, something might just give me average returns. So जैसे lower duration debt होगा उसमें average return आएगा, but corporate debt वाला जो mutual funds है उसमें lose भी कर सकते हो. बिल्कुल.
और अगर हम डेट की बात करें एट एक्सट्रीम लेफ्ट एंड यू हैव समथिंग कॉल्ड G-Secs. तो G-Secs इज गारंटीड बाय सॉवरेन. तो अगर आप एक बैंकिंग PSU डेट फंड या कोई एक G-Sec फोकस्ड फंड लेते हो तो वहां पे हो सकता है आपको रिटर्न ज्यादा नहीं मिले, बट योर कैपिटल विद इन द डेट इज there's a better chance of being protected versus अगर आपको एक कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड में डालो. अगर हम इक्विटी की बात करें, सो लार्ज कैप वुड अगेन बी समथिंग ऑन द एक्सट्रीम एंड ऑन द लेफ्ट कर्व. Micro cap would be something which would be on the extreme end of the right curve. Sure. Even within fixed deposits, आज while there's no risk per se in a fixed deposit because RBI आपको 5 लाख तक की गारंटी देता है. आप देखोगे कि HDFC बैंक आपको शायद 7% का रिटर्न ऑफर करे, but a small finance bank might offer you 8.5%. Sure. So that is the risk that we are talking about. But in reality, like within the asset class, अगर हम asset classes की बात करें तो FD और real estate would be at extreme left. Crypto, alternative assets would be at extreme right, equity would be somewhere in between. But अगर हम उस asset classes को भी further deep dive करें तो this is how we should interpret it. Debt में G-Sec to corporate bond, asset classes में fixed deposit to crypto, debt again equity में large cap to micro cap. So that's how you look at risk and return. So problem ये है कि हमें हमेशा ऊपर वाला चीज दिखता है कि इसमें डाल दिया होता ये 10x हो जाता, इसमें डाल दिया होता तो डबल ही हुआ है. बट डाउनसाइड कोई नहीं देखता है. सो फॉर एवरी 5 great investments that have been 10 baggers, there are 100 investments that have not been even like at the same price. So it's important to know what risk you're getting into. एक मतलब this is a fairly good and acceptable explanation what you have given. but इसको मेरे को अगर थोड़ा सा एक इंडिविजुअल के लिए फ्रेमवर्क में कन्वर्ट करना हो तो हाउ डू आई क्वांटिफाई दिस वर्किंग? बिकॉज लीनियर इट्स ईजियर टू क्वांटिफाई कि देन इक्वेशन में आप डाल सकते हो, बट ये थोड़ा सा वेग नहीं हो गया? और जब तक हम क्वांटिफाई नहीं करेगा इसको हम ऑप्टिमाइज कैसे करेगा? जैसे मैंने डिसाइड कर लिया सपोज कि मुझे रिस्क लेना है, मुझे खेलना है और मैं क्रिप्टो में डालना चाहता हूँ, तो मैं कैसे डिसाइड करूँ कि मैं कितना डालूँ क्रिप्टो में, गिवन दैट इसका रिस्क प्रोफाइल कितना वाइड है? यू गेटिंग माय क्वेश्चन? अगर इसी को सपोज मैं स्टॉक में डालूँ कि मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे स्टॉक में इन्वेस्ट करना है डायरेक्ट, बिकॉज मैक्सिमम लोग जो मेरे भी सुन रहे होंगे वो या तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रखे हैं या ट्रेडिंग कर रहे होंगे, उनको मैं बोलता हूँ स्टॉक में भी तुमको करना है. अब लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि कितना परसेंटेज करें, और उस कितना परसेंटेज में भी फाइनली आपका ये फ्रेमवर्क के हिसाब से मेरे एक और क्वेश्चन आ गए कि कितना परसेंटेज स्मॉल कैप में करूँ, कितना लार्ज में करूँ, बिकॉज द एक्सपेक्टेड रिटर्न range is quite wide. No, I think that's a fair question. I think at a fundamental level, it is important to know what your risk appetite is. The other bias which I see as of now, last 3 years have been very great for markets. After COVID, markets have just been one way. So as such, a lot of new investors who've come in, they've never seen a down cycle where markets don't move for 5 years. I mean, you from experience know this. So now it is important to know that अगर आपको कुछ ऐसा एक मैड मनी एलोकेशन करना है वेर नहीं मेरे को ये रिस्क लेना है, डोंट एंड अप डूइंग विद अ लार्ज पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो. ओके, एटलीस्ट कैपिटल मे बी 5% और 10%. Okay. अब ये 5 रखना है कि 10 रखना है, दैट कैन डिफर फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल. हाँ, ये हो सकता है कि कोई इसे 40 रखना चाहे, बट देन यू शुड ऑल्सो नो व्हाट रिस्क यू आर गेटिंग इनटू. सो एलोकेशन की बात तो वहीं पे वन कैन लुक एट. रही बात एक्विटीज में स्टॉक पिकिंग की, सो वी हैव लाइक अ फ्रेमवर्क फॉर दैट एज वेल. ओके, हाउ यू स्टार्ट एंड देन यू कैन टेक अ चॉइस कि हाँ, डू आई वांट टू बेट ऑन द विनर और डू आई वांट टू बेट ऑन समथिंग विच कैन बी अ पोटेंशियल इमर्जिंग विनर, राइट? तो वहाँ पे द आउटकम्स कैन बी डिफरेंट. लाइक देयर आर लॉट ऑफ बैंक्स पिछले 3 साल में, while banking has done really well, PSU banks which were kind of written off by people, they've done really well. But a bank like HDFC Bank, despite having all the great metrics, despite delivering the same growth every year, quarter on quarter, it has kind of remained at the same level for almost 3 years now. So does that make it a bad investment? And because I've made these bets and they've done well, does that make it a good investment? So as such, there's no definite answer to it, right? At the end of the day, I think 2-3 चीजें हैं जो define करेगी. One is what is your expected return, and defining this very early is very important. ये कैसे होता है? So अब मैंने तो चलो उसे क्वेश्चन पूछा ही बोले जितना मिल जाए उतना अच्छा है. So जैसे at some level I have made peace with myself that if I am able to make 15 to 20% in a year, I think I am really good. But every year बनेगा?
अब मुझे तो 3-4 साल ही हुए एक्टिवली करना, तो मे बी भी आई एक हैव problem. बायस ऑन माय साइड कि मे बी बट व्हाट यू टॉकिंग इज अ CAGR कि कोई साल खराब भी हो गया तो नेक्स्ट ईयर जी कॉम्पनसेट कर बिल्कुल बिल्कुल. So I think once you know that, and this is also something which we put in the framework, कि this is gonna help you define the structure well. Because क्या होता है कि markets 1 year have given you a 60% return. अगले साल फिर 25% return आ गया. So suddenly, you know, you make this as your new normal. या Whereas, अगर if you've already entered with a belief that okay, और with a definition कि मुझे 15% रिटर्न ही चाहिए या मुझे 20% रिटर्न ही चाहिए, तो you can then take a call कि अगर मेरा 70% रिटर्न आ गया, it is always a good idea to take some money off the table. ओके अगर नेक्स्ट ईयर मान लीजिए यू नो थिंग्स गो बैड, देयर इज अ वॉर, यू नो मार्केट्स क्रैश 50%, इट विल आल्सो गिव यू अ गुड लीवे टू डिप्लॉय दैट कैश बैक, राइट? तो यहाँ पे एक सिंपल कर्सरी अंडरस्टैंडिंग डिस्पाइट गेटिंग अ लॉट इनटू टेक्निकल्स वर्क्स और हेल्प्स. Correct. आज इसके पहले बिकॉज यू नो एज इंडियंस वी ऑलवेज इन्वेस्टेड इन रियल एस्टेट और वी ऑलवेज इन्वेस्टेड इन गोल्ड. Our holding periods are something that we are very comfortable with. या मतलब we can hold on to an asset for 20 years, 30 years. But equities, because it flashes you a price every day, हमें लगता है return every day कुछ ना कुछ हो रहा है. So कहीं ना कहीं I think number one is the allocation that I said, and second is a large part of your allocation should go to equity. So in the further slides we've made a case that why equities is something. I mean ऐसा नहीं कि equities is something जो choice से आया है, but actually वो elimination से आया है कि we are like ठीक है, debt is not something which I can hold for long term. Gold is not something which I wanna keep for long term for me to meaningfully generate returns. But equity is something where I have data, where I know it's fairly regulated. More and more flows are now getting into equities. A part of your retirement accounts are now getting into equities. So there is a case for keeping equities as a large part or as a fairly decent allocation in your retirement account or in your family surplus account. Correct. That's the case. So, you know, हमने risk reward की बात कर ली. You know, we've talked about some mad stuff that has been happening, you know, with respect to asset classes. There's another segment of people. They are actually defined as high earners, not rich yet. So it's called Henry. अच्छा Again, these are people, you know, who work a job. They have a decent income coming in. But at the same time, they are also very aspirational. So they want the best brands. They want to go on a foreign tour. So going forward, there is a case that, you know, your expenses are something which are going to continue to increase. Which is why it's kind of important that your retirement or, you know, money that's going to maybe, you know, be saved for a rainy day is allocated the right way. So, and I think kahin na kahin to understand about what your goals are, it could be short term, it could be medium term, it could be something which is beyond 10 years. Usse you get a view or you get some sort of clarity कि how much money do I need at what level. Otherwise it's just, you know, हाँ income आ रहा है, salary आ रही है, खर्चे हो रहे हैं, and you know life goes on. So we are trying to create a structure or a method in which you define what your needs are, you define what your aspirations are, and accordingly do the allocations accordingly. So what are the questions that we are trying to ask? So we are actually solving for just 4 basic questions: how much, how to invest, where to invest, and then you measure your outcomes. ठीक है Now how much may, you know, we've all seen this, but again, you know, in the interest of repetition, people always try and see कि ठीक है मेरा इतना इनकम है, मेरे इतने खर्चे हो गए, तो उससे मेरी इतनी सेविंग्स आ गई. आई थिंक अनदर अप्रोच शुड बी कि इनकम का मैं एक एज अ रूल ऑफ थंब रखूँ कि दिस विल बी माई सेविंग रेट. तो इवन इफ लेट्स से आई से कि आज फॉर एग्जाम्पल माई इनकम इज 10,000 रुपीज एंड आई एम सेइंग दैट आई एम गोना सेव 10% ऑफ इट इरिस्पेक्टिव. अब 10% of 10,000 is 1 lakh rupees. 10% of 10,000 is 1,000 rupees. Now, if I am very clear कि मेरे को सेविंग रेट या तो सेम रखना है या बढ़ाना है. अब ये इनकम जब 10,000 से 1 लाख हो जाएगी, which over a person's, you know, earning life cycle is gonna happen. So this savings also goes from 1,000 to 10,000. And if you add another layer to it कि हाँ my saving rate goes to 15% or 20%, the actual amount of money that you are left with to save actually gets very high. Because there's no point investing 5,000 rupees in something, and even if it doubles, it doesn't change your life much. तो at the very first understanding कि आपका जो saving rate है वो कितना है,
So you take stock. ऐसा नहीं है कि this is something which is defined on paper. You take stock. You take out last 3-4 साल का your bank statement, your credit card statement. You'll get a sense how much you're spending. And you ask this question to yourself. You will have an answer whether you're spending more or whether you need to earn more. Right? So that is the first step. Second is how to invest. You can always seek help. There are a lot of registered investment advisors. There's a lot of stuff available on the internet. Do your due diligence. There are a lot of tools. For example, if I have to screen something about a stock, or today, for that matter, a mutual fund, I go on StockEdge and, kind of do it. So I think ऐसे करके today there are a lot of platforms that are offering this. So you can actually understand a lot of these basic stuff. And then where to invest, right? So we've discussed asset classes and we'll make a case why equities is where you should be at. And finally, measuring outcomes. So how much is too much? Which is why I think knowing what my expected rate of return is very important. Now, this is a tough question, but kahin na kahin, I think if you define that very early, it kind of solves a lot of problems. Because agar hum, and I've done like some reading on this, agar hum dekhe history of booms and busts, there are only two elements which are involved, which is greed and fear. So kahin na kahin aapne apna greed define kar liya ki this is how much I want. Then what will happen is ab wo 25 mein jaye ya 7 mein jaye, what is the benchmark you're trying to achieve. There could be years where it doesn't hit 15, right? So let's say, for example, you've defined I just want to make 15% return. Now let's say 2 years you've just made 7. Okay, so probably there's something wrong with my strategy. Do I need to rejig it? Do I need to reassess things? Or am I in the wrong asset classes? अगर equity मुझे promise दे रहा है कि 13-14% historically दिया है, तो 2 साल से अगर मेरे returns नहीं बने, markets खराब हो सकता है, मेरा allocation खराब हो सकता है, or maybe it's just a bad time. Because the return is not going to be linear. It's going to be volatile. So that is going to help you sort of tide through that volatility if you've defined what your expected rate of return is. And kahin na kahin, this concept of target net worth, right? That by, let's say 60, I want to hit this much amount in my corpus. And then if you backwork the math, you will see the number is probably 13%. It's probably 14%. आपने कर रखा है? मैंने कर रखा है. तभी 15 आया आपका, वो 1500. हाँ. Whatever the number is. Correct. अजी इस पे एक मेरा कॉन्सेप्ट है. Just take, if you allow me to share something. Yeah. ऑल्दो आजकल लोग बोलने लगे हैं कि आप ज़्यादा बात करते हैं, लेकिन अब अंदर में मेरे भी ये तो निकलता है, क्या करें. सो पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो कॉन्सेप्ट है ना, इट इज यूनिवर्सल फॉर एवरीवन. यस. राइट. आज हम लोग कैजुअली 15% वर्ड यूज़ कर ले रहे हैं, 15%. और एक्चुअली हमको थैंक यू करना चाहिए कि वी आर लिविंग इन अ कंट्री वेयर हम 15% कैजुअली यूज़ कर ले रहे हैं. बिल्कुल. क्योंकि हमारी कंट्री का डेमोग्राफी ऐसा है, हमारा इन्फ्लेशन ऐसा है, हमारा ग्रोथ ऐसा है कि 15% तो हमको नॉर्मल लगने लग गया है. यही 15% यूएस वाला यूज़ नहीं कर पाता है. वो बोलता है बस 5% कंपाउंडिंग हो गया, बट मैथ्स दोनों के लिए सेम है. यस. हमारे लिए भी वही वैलिड है, उसके लिए भी वही वैलिड है. तो इसका मतलब अगर हम सेम बेस पे बैठ गए तो विल बी फार मोर बिगर देन अ यूएस गाय. राइट. उनके पास एडवांटेज है कि वो 15% बात करते थे 25-30 साल पहले, जब वहाँ इन्फ्लेशन हाई था, जब वहाँ इंटरेस्ट रेट हाई था. तो उस समय उन्होंने मेहनत करके अपना कैपिटल बना लिया, उसका एडवांटेज वो उठा लिए, और 5% भी अभी ग्रो कर रहे हैं तो उनको चैलेंज ही नहीं है. हम आने वाले 10 साल में अगर नहीं बनाएंगे तो हमारे बच्चे हमको कोसेंगे. कि खुद तो मर गया मेरे को छोड़ गया इतना छोटा सा कैपिटल जिसपे मैं खाली 5% रिटर्न जनरेट कर रहा हूँ. तो उस समय का जो इन्फ्लेशन होगा, उस समय बेचारा लाइफस्टाइल वो जी नहीं पाएगा जो हम आज जी पा रहे हैं. बिल्कुल. 15% तो बेयर मिनिमम है, क्योंकि इंडिया आज के डेट में वो अपॉर्चुनिटी देता है कि हम वो जनरेट कर पाते हैं. हम सिर्फ आलसी ही होंगे कि हम 15% नहीं जनरेट कर पा रहे हैं. एग्रीड. बिल्कुल. आई मीन एक्विटीज की अगर हम बात करें तो वी हैव डेटा फॉर निफ्टी फॉर द लास्ट 20-25 प्लस ईयर्स. उसमें निफ्टी ऑन एन एवरेज हैज गिवन यू अ रिटर्न ऑफ 13% विद अ स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 40%, व्हिच मींस कुछ सालों में निफ्टी ने हो सकता है 50% भी रिटर्न दिया हो, कुछ साल -25% भी हुआ हो. तो कहीं ना कहीं ये तो एक सिंपल इंडेक्स का मैथ हमारे पास है. बट सी एट द एंड ऑफ द डे वी आर नॉट हियर टू बीट अ इंडेक्स. वी आर हियर टू एंश्योर 10 years, 20 years from now, we have better financial outcomes for ourselves. So आज अगर हम एक certain lifestyle live कर रहे हैं, maybe in 10 years will we still live that same lifestyle,
or a little better. That is what we are aspiring for. So for that, the case for equities actually becomes stronger. Correct. Because अगर हम historical returns की बात करें और कहीं ना कहीं उसकी future potential की बात करें, हो सकता है रियल एस्टेट हमें वो रिटर्न नहीं दे, हो सकता है गोल्ड हमें वो रिटर्न नहीं दे, हो सकता है डेट हमें वो रिटर्न नहीं दे, तो बाय एलिमिनेशन वी अराइव्ड एट एक्विटीज. ऐसा नहीं है कि हमने बस एक्विटीज उठाया और हमारा कुछ उसको लेके प्यार है तो वी जस्ट वांट टू बी हियर. In fact, today increasingly fixed income investors, so the likes of let's say a pension fund, इंडिया की बात करें तो आज हमारा सैलरी का एक पार्ट जो प्रोविडेंट फंड में जा रहा है या अगर हमारा एनपीएस अकाउंट है और पेंशन में जा रहा है, they are making serious allocations to equities today, and this is big money flowing in. So even someone who handles your retirement account is now talking about equities in a very serious way. अगर हम ये सब बातें नहीं भी करें, हम पुरानी बातें करते हैं. हर घर में एक LIC पॉलिसी है जो किसी के नेबर अंकल किसी ना किसी ने उन्हें एक बेच के रखा है. LIC आपके पैसों को लेता है, राइट. द टिपिकल रूल ऑफ मैथ इज यू एंड अप गिविंग लेट्स से 10,000 रुपीज अ ईयर फॉर 20 years. आपने 2 लाख रुपए दिए. एट द एंड ऑफ 25th year यू गेट 4 लाख रुपीज बैक. लोगों को लगता है पैसे डबल हो रहे हैं, बट कोई उसका एक्चुअल रिटर्न एक्सेल में निकाले टैक्स एडवांटेज लेने के बाद भी 7, 7.5, 8% रिटर्न बैठता है. LIC आपके पैसों को लेके क्या करते हैं, वो इक्विटीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं. ऑब्वियसली देयर आर रेस्ट्रिक्शंस थ्रू व्हिच दे कैन यूज, बट दे आर अ सीरियस डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर. तो आज जब आपने अपना रिटायरमेंट किसी को सौंप के रखा है और वो इक्विटीज में कर रहे हैं, टुडे यू आर इन अ गोल्डन स्टेज वेयर यू कैन डू दैट योरसेल्फ एज वेल. सो लेट्स क्रिएट बेटर आउटकम्स with taking less risk. That is what the whole objective is. That is what he is going to teach us कि less risk या calculated risk लेके कैसे आउट करना. बाय द वे दोस्तों, FD अगर आप करते हैं ना तो आपसे बड़े क्रिमिनल नहीं है कोई. मैं सॉरी, आई एम एब्सोल्युटली अगेंस्ट FD. ये जो बैंक के अंदर में FD करके बैंक मैनेजर को पैसे दे रहे हैं, बैंक वालों को मर्सिडीज खरीदने के लिए आप मौका दे रहे हैं, क्यों कर रहे हैं आप ये अपने साथ? FD से क्या ही हो जाएगा आपका, कोई घर में कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है. प्लीज़ फटाफट FD तोड़ो अपना, और कुछ नहीं तो निफ्टी में ETF चालू कर दो, वही 13-14% रिटर्न दे देगा. FD देंगे क्या होगा, क्यों? So I want तो फायदा है. एंड कितना बड़ा कैपिटल इंडिया का FD में पड़ा है, और ये बैंकर लोग. अच्छा, FD से फायदा क्या? अल्टीमेटली गवर्नमेंट तो 5 ही लाख सिक्योर कर रखा है. मुझे समझ में आता, 50-50 लाख रुपए का FD करके बैठे हो, 5 ही लाख सिक्योर्ड है भाई. आई एम एब्सोल्युटली एंटी FD. आपका क्या ओपिनियन है? FD पे आपका जो ओपिनियन है वो एकदम सही है कि रेट ऑफ रिटर्न जो है काफ़ी कम रहता है. तो उसके अलावा अगर अपने म्यूचुअल फंड में भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो भी कंपेरेटिवली ग्रोथ इज़ हायर ऑन अ टाइम फ्रेम ऑफ 2 to 5 years एटलीस्ट इफ यू कंसिडर. और इसके अलावा एक और क्वेश्चन मैं पूछता हूँ. जैसे अभी आपने LIC का या इंश्योरेंस पॉलिसी का जिक्र किया, तो उसमें एक और इशू आता है कि अगर मान लीजिए अपने इंश्योरेंस अमाउंट डिसाइड कैसे करते हैं. जो भी अर्निंग मेंबर होता है तो उसका मान लो 20x जो भी करंट अर्निंग्स है उसका 20x 25x अपने डिसाइड करते हैं. तो अगर आप LIC से उतने अमाउंट का पॉलिसी लेने जाओगे तो आप उसका प्रीमियम भी एक्चुअल प्रीमियम नहीं भर पाओगे. तो उस तरीके से भी लोग खाली इन्वेस्टमेंट के हिसाब से LIC में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं. लेकिन अगर आप सोचें कि अगर आपको 1 CR का इंश्योरेंस लेना है, क्योंकि आजकल इट इज़ कॉमन कि 1 CR हर आदमी सोचता है कि हाँ अगर आफ्टर डेथ अगर 1 CR नहीं हो तो वो उसका घर नहीं चल सकता है, कि मिनिमम बैंक इंटरेस्ट से भी उसका घर चल जाए. तो उसमें अगर अपने 1 CR का इंटरेस्ट लेने जाएंगे LIC में तो बहुत एक अच्छा खासा पैसा लगेगा कि आपके मंथली जो इनकम है वही खत्म हो जाएगा खाली प्रीमियम देते. कितना लगता है प्रीमियम 1 CR पे? काफ़ी लगता है. टर्म इंश्योरेंस का बात करेंगे? नहीं, टॉकिंग अबाउट एंडोमेंट पॉलिसी. अब एंडोमेंट पॉलिसी बोले कि टर्म एंडोमेंट और अ मनी बैक पॉलिसी. हाँ, सो मनी बैक इसमें शुड वी डिस्कस अभी? अभी करिए ना, बोलिए ना. सो देखिए, पहला चीज़ तो ये कि LIC जो ट्रेडिशनल एक पॉलिसी रहा है कि आप पैसे दोगे एंड 20 साल बाद आपको मिलेगा, राइट. बट इंश्योरेंस एज अ कॉन्सेप्ट इज जस्ट अ रिस्क प्रोडक्ट, राइट. तो पहला चीज़ ये है कि इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को हमें साथ में नहीं देखना चाहिए. तो अगर आप आज 1 करोड़ का एक टर्म पॉलिसी लेने जाओगे, आपका प्रीमियम हो सकता है 20-25 हज़ार रुपये ही हो, उससे ज़्यादा नहीं हो. बट वही अगर आप एक इक्विवेलेंट मनी बैक पॉलिसी लेने जाओगे, हो सकता है योर प्रीमियम्स कैन बी 10x. तो प्रॉब्लम ये है कि टर्म लोग क्यों नहीं करते, क्योंकि हिस्टोरिकली ये एक थॉट बेचा गया है कि भाई प्रीमियम देते रहो, 10 साल बाद वापस मिल जाएगा. टर्म में ये है कि वो खर्चा हो जा रहा है, वो वापस नहीं आ रहा है किसी भी तरह से. तो वो एक आई थिंक एक अंडरस्टैंडिंग का भी एक चैलेंज है, क्योंकि आज आप
मान लो LIC आपको लेट से कोट करता है 1 करोड़ के लिए 3 लाख रुपए फॉर एग्जाम्पल, और टर्म आपका 10,000 रुपये में हो जा रहा है। आप अगर 10,000 में टर्म प्लस 290 का एक सिप भी कर लोगे, आफ्टर 20 years our outcome will be very different. Yes, that's it. So I think understanding that is important. LIC is neither investment nor insurance. It's just अभी समझते नहीं है कि संक कॉस्ट क्या होता है, वो अपने कॉन्सेप्ट अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, बट स्टिल स्टार्टिंग स्लोली कि लोग अब समझने लगे कि अगर टर्म प्लान में पैसा डाल रहे हैं तो इट इज अ संक कॉस्ट। ये अभी आप समझिए इंडिया के अंदर में लास्ट 25 साल से फाइनेंशियल मार्केट को बेचा किसने? सबसे पहले तो फाइनेंशियल प्रोडक्ट को बेचा बैंकों ने। पूरे कंट्री को उन्होंने एफडी बेच के गुलाम बना लिया अपना, वेरी ऑनेस्टली, राइट। दूसरा किसने बेचा फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स? LIC एजेंट्स ने बेचा। घर घर में एजेंट अपॉइंट कर दिया और सबको इंडोमेंट बेच के सिक्योरिटी का एक वो दिखा दिया कि भैया इससे सेफ्टी होगा, ये कर लो। But you know, like kahin na kahin, I think both LIC and these banks have done, you can say, like the first step to ensure that people move from hard assets to financial assets. हाँ, वो ये एक प्रॉब्लम है कि they were not aware कि returns क्या बैठ रहे हैं, and you know, because people at some level will also a little complacent. Today when people are asking these questions, they get the answers. Correct. And today we have data and participation is high. But कहीं ना कहीं we can say कि कहीं ना कहीं the genesis of them ensuring कि हर घर में एक financial product हो या financial savings हो, I think both of them should get the due credit to build the distribution. चले ठीक है, दे दिया क्रेडिट। ठीक है, आप लोगों को क्रेडिट दे दिए, थैंक यू, बहुत अच्छा काम किए। अब हम लोगों को करने दीजिए, हम लोगों को सही डायरेक्शन आप देना चाहते हैं, हमको करने दीजिए उनका काम। और ये एफडी में लोगों को मत पुश करवाइए प्लीज़। स्पेशली लॉन्ग टर्म जो सेविंग्स है लोगों का, वो एफडी के लिए नहीं बना है। एफडी ठीक है, शॉर्ट टर्म एफडी पार्क कर दो, 6 महीने 1 साल वाला करा लो, बट ये 10-10 साल वाला एफडी क्यों करवा रहे हो लोगों का भाई? तो सर ये जो LIC का जो प्रोडक्ट्स है, तो इसको हम लोग इंश्योरेंस प्रोडक्ट माने या इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट माने? It's neither nor. हाँ, नीदर नॉर। इंश्योरेंस का जो क्राइटेरिया है वो तो सर्व नहीं करता है कि जैसे लोग जनरली LIC पॉलिसी लेते हैं कि हाँ 15,000 का कर दो, 20,000 का कर दो, जो एक्स्ट्रा पैसा है, जो एक्सेस पैसा अपने हाथ में, ठीक है चलो साल का 20-25 हज़ार रुपये चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो 20-25 हज़ार से जो एक्चुअली जो इंश्योरेंस का जो नीड है कि हाँ अगर मान लो इनकेस जो ब्रेड अर्नर है उसको कुछ हो जाता है, तो आफ्टर दैट विल दैट फैमिली बी एबल टू सर्वाइव विद दैट इंश्योरेंस प्रीमियम? क्या बात कर रहे हैं सर आप? तो मैं तो बहुत लोगों को देखा हूँ कि जो बच गए क्योंकि वो इंश्योरेंस करा रखा था, नहीं पूरा फैमिली बच गया। नहीं तो वो Term insurance, not LIC. मैं LIC का बात कर रहा हूँ। LIC में तो अलग अलग प्रोडक्ट है ना सर। अभी अपने टर्म इंश्योरेंस की बात करें कि इंडोमेंट की? एंडोमेंट की, जिसमें पैसा बाद में मिल जाता है वापस, जैसे हाँ, वो तो क्लैरिटी है कि वो तो करना ही वही है। मैं पूछ रहा हूँ, वो उसको इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट माने या उसको इंश्योरेंस प्रोडक्ट? उसको तो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट ही मानना पड़ेगा, क्योंकि इंश्योरेंस तो वो सेटिस्फाई नहीं हाँ, करता। investment product which is not tied to your objective. नॉट टाइट टू योर ऑब्जेक्टिव, क्योंकि अगर आप बेचा गया है। क्योंकि आप 20 साल अगर उस एक प्रोडक्ट में रह रहे हो और आपको पता है आपका रिटर्न 5-6% ही बन रहा है, then probably it's not the right product considering the time you're investing in it and the lock-in which is there. वही मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि इंडिया में अगर आपने 15% CSR नहीं जनरेट किया है तो आप बहुत अपने बच्चों के साथ आपने जस्टिफाइड नहीं किया है। 7% में आप नहीं रख सकते अपना पैसा। और आप क्रिप किए हैं, आपके फादर को आपने बोला है ये चीज़ कि पापा इक्विटी आपने चालू नहीं किया टाइम पे। आज तो बोल रहे हैं ना, कई लोग तो बोल रहे हैं ना पापा को कि आपने इक्विटी नहीं किया, देखिए विजय केडिया जी कितना पैसा बना ली। और किया भी तो सफिशिएंट फंड से नहीं। सफिशिएंट नहीं किया, और वही मिस्टेक आप भी कर रहे हैं अभी सेम। तो आपके बच्चों को भी तो आपको जवाब देना पड़ेगा बाद में, ठीक है? So you know, like on this, I actually want to share a personal story on this whole FD thing. So I will probably not say that आप सीधा you go all out and do this. I think कहीं ना कहीं when you start saving or when you've started earning, if your first investment is in FD, then kahin na kahin I don't think that's a problem, because kahin na kahin you've taken the first step to save. Yes, that money should not be something for a long term outcome. Like when I started earning, right, the first thing that I actually wanted to do was to book an FD. अच्छा, Right. And this is, I'm telling you a story of 2017. अच्छा। So 2017 I got my first salary, and the first thing I wanted to do, obviously I sent the money back to my mom and dad, and then I was like, I want to put a part of it in FD. And I shared this with my dad, and my dad used to be very active in equities. So he's like, तुम एक काम करो, वो पैसा मुझे दे दो, और तुमको FD में जितना रिटर्न मिले तुम मेरे से ले लो, right?
and he told this to me in a very cryptic way, and I was like, ki, if my dad is telling this, then okay, I mean there's some wisdom behind it, right? तो मैंने बोला कि नहीं, मैं अब FD नहीं करके ना मैं सीधा equities करता हूँ. And I picked up 5 stocks, the names of which I would not be shy to share. Yeah. Those stocks were Avanti Feeds, Vakrangi, DHFL, and there was one more name I'm not able to recall, but you can say these 4 stocks had like a sizable allocation with my first savings. And हुआ क्या कि salary आती गई, and I actually kept doubling down on Avanti Feeds. Okay. I had this aspiration कि कभी ना कभी मेरा नाम आना चाहिए top 1% shareholder list में, तो मैं भी could becomes like a part of this company. And my understanding was ठीक है, return अच्छा है, balance sheet ठीक है, business अच्छा है. What's my downside? Now I'm an equity investor. I actually own a part of Avanti Feeds. But what I didn't realize was that business was very highly cyclical, and there was a big risk with respect to global factors. तो ऐसा हुआ कि I ended up investing a significant amount of my initial savings in one stock at the peak of the cycle, and वहाँ से the stock just tanked almost 60-70%. So that was my first, you can say lesson in the markets that maybe you need to do more work, or maybe you don't know much about things despite knowing a lot of things. So it humbled me very well. It is far bigger than the interest you would have earned in FD. वो लॉस से जो आपको लेसन मिल गया वो ब्याज से बहुत बड़ा है. बिल्कुल. बट लोग उसको फायदा नहीं उठाते. बिल्कुल. पॉइंट ये है कि yes, for your short term needs it's the best place to do, because ऐसा हो सकता है कि आपका एक गोल चल रहा है, and let's say you hit that goal, because it's very important for us to also know कि once we hit the goal what to do. अगर आपका गोल है 5 साल में I need 20 lakh rupees for let's say a holiday, and let's say after 3 years you hit that goal of 20 lakhs, you can take that money out, put it in an FD, because your goal has been met, right? And that money is something that you need to use in 6 months to a year. I have seen a lot of people try and dabble luck in equities with the money that let's say they need for a college education, they need for a surgery, and we have stories, right? लोगों ने फ्रैंकलिन क्रेडिट रिस्क फंड में फॉर एग्जांपल पैसे पार्क कर दिए, पैसा ब्लॉक हो गया 3 साल, बहुत लोगों की सर्जरीज नहीं हुए, बहुत लोगों ने पढ़ाई करने लोग नहीं जा पाए. So that way I think it's the no nonsense most simple product to do, and that is the use case for it. कभी आपको लगे कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है, I might need this money for 6 months to a year, I think it's a great place to just park it, right? हाँ, अब ये एक आर्ग्यूमेंट हो सकता है कि यहाँ पार्क नहीं करके आप सेविंग्स अकाउंट में भी पार्क कर सकते हो, बिकॉज एज सच ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं आ रहा है आउटकम्स में. बट फॉर लॉन्ग टर्म गोल्स येस, देयर इज नो डाउट अबाउट इट. FD is not the asset class to choose. FD gives you stability, it gives you a short-term rate of return, but for your long-term objective, maybe it's not the best, or it shouldn't be in your consideration at all. चलो मेरा काम तो हो गया. इसमें आई एम श्योर 100 लोग तो अपना FD तोड़ेंगे. Great. So finally what we mentioned, right, that why are we making a case for equities, or why are we moving away from your traditional investment modes? So why not FD or debt? Why not gold? Why not real estate? So why not FD or debt? We've discussed a fair bit of why not to do it. Why not gold? Again, it's an asset class of choice. I think, my economics professor uses this line, Rajiv sir, and, I keep reusing this time again. He said, Indians don't have a love for gold, they have a lust for gold, right? So now, while in India, a large part of Indians have parked their money in gold, gold sabke ghar mein hai. Whatever returns that we see, it has not happened because gold prices have moved. It has actually happened because the Indian rupee has depreciated against the dollar. So that is what has generated returns for us. And there is a big case, I remember Harsh Madhusudan had come on your face-to-face a while back. There's actually a case, and people, if they want to understand geopolitics well, I think, and economics, he's the guy to listen to. There's actually a case that in the next 10 years, rupee might appreciate against the dollar, right? So there could be a possibility that even if gold prices move, the appreciation of the rupee against dollar might not, create meaningful impact. In fact, prices might fall.
Having said that, yes, as a precious metal allocation or ठीक है इसका value is globally accepted. If someone wants some gold in their portfolio, they can do it, but don't expect anything beyond 2.5%, which is guaranteed by the government in terms of interest on SGBs, and kind of like a punt on whether gold prices go up or not. Okay. And finally, why not real estate? Because for every Gurgaon and every Pune, there are hundreds of pockets which have not given any value. So people will try to say कि मैंने ये फ्लैट खरीदा जब प्राइस 10,000 रुपीज स्क्वायर फीट थी, आज उसका प्राइस 16,000 रुपये हो गया. आई एम लाइक ग्रेट, कैन यू मोनेटाइज इट? आई मीन इफ यू बाय अ हाउस, monetizing it always becomes a challenge. There is opacity of data. You don't have data set ki what is the real price in that neighborhood. Brokers could quote 15,000-16,000 rupees a square feet. High chance when you do the transaction 12,000 में भी माल नहीं बिके. And this is not just like in one city, it's pan India. Yes, there will be pockets, there will be markets which will be very liquid, but typically there is opacity of data. Generation of liquidity could take longer time frames. If you want कि हाँ मुझे आज एक real estate बेचना है, it can take anywhere between 6 months to a year. तो हम ये रियल एस्टेट रीट्स के थ्रू कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं. REITs is fairly liquid. It's a regulated product. A lot of fixed income investors are in REITs. So India में आज के डेट में you have 4 REITs which are listed. Can a real estate return income and REITs income be in sync? या आपको लगता है REITs में हमेशा इनकम कम रहता है versus real estate? I think in real estate you can take bold bets. Okay. कि for example if someone bought a piece of land in Gurgaon, maybe a REIT will not offer you that opportunity. REIT is fairly regulated, but at the same time, I think from a risk-reward perspective, REITs would be somewhere here, real estate would be somewhere here. Okay. So the idea is you reduce the risk. आज के डेट में REITs की भी अगर हम बात करें, Nexus REIT which just came out. It's India's first shopping mall REIT. A lot of people don't know about this product. Now they own a portfolio of 17 shopping malls pan India. Nexus. It's again backed by Blackstone. I mean, they were the earlier promoters of that REIT. अब जितने भी shopping malls है, as a play, right? Now, as a retail investor, today you can actually invest in a shopping mall with as low as 300 rupees, as low as 125 rupees. अच्छा, REIT का दाम हाँ, वो इशू आई थी 100 रुपए में, 125 हो गई है 4 महीने में. वाह. So as a real estate, तो पता ही नहीं था, मेरे को भी नहीं पता था इशू के बारे में. 25% रिटर्न मिल गया 25% 4 महीने में. अगस्त में आई थिंक इशू आई थी. तो गिरेगा भी नहीं 125 का. कहीं ना कहीं आई मीन अगर हम लिस्टेड रीट्स की बात करें तो एम्बेसी रीट एट वन पॉइंट वाज एट 370 इश, वहां से वो करेक्ट भी की है. अगेन दैट्स अ मोर ऑफिस स्पेस रीट. अच्छा. तो देयर इज अ ग्लोबल कंसर्न कि वर्क फ्रॉम होम, एआई आ चुका है, तो क्या आईटी डिमांड रहेगा, ऑफिसेस की जरूरत होंगी. तो वो एक यू कैन से लाइक there's a fear that office as an asset class might not do well. अच्छा. That way, a shopping mall, which is more retail focused, and they call it as UCCs, urban consumption centers. Okay. So typically on a weekend, you'll see a family go to a shopping mall, dine, watch a movie, do some shopping, come back. Correct. So as such, shopping mall is the proxy to retail consumption in India. सही है. Right? तो किसी को अगर ट्रेंट नहीं खरीदना है, डीमार्ट नहीं खरीदना है, या लेट्स से टाइटन नहीं खरीदना है, आपको बस एक जमीन खरीदना है, तो मे बी Nexus REIT is a product for you. So that way I think it's a good mix between debt and equity. It's backed by real assets, which is in real estate. As a owner of that shopping mall, you make rent every quarter. It gets deposited in your account. And if the asset does well, the price of the REIT also appreciates. ये रेंट जो मिलता है रीट्स के अंदर में जी, ये हमारे पास रेंट के रूप में आ जाता है कि ये? So we get it in 3 parts. So one part of it is dividend, one part of it is interest, and one part of it is repayment of debt. So some part is taxable, some is non-taxable, but it's a good source of cash flow. अगर हम इसका post tax return निकालें, there's a high chance that it could beat FDs in the long term. So 3 to 4 year period का अगर हम time frame ले, या अगर किसी को real estate में invest करना है, I think REITs is probably the way to do. Unless you know something about something, right? अगर आपको पता है कि let's say यहाँ एक metro बनने वाला है, यहाँ एक highway बनने वाला है. Again, a lot of times these things are announced, but a lot of times those highways never see the light of the day. So वो एक बड़ा risk है. But here you have asset managers, you have global guys who are doing this. Pre-lease spaces है, you have grade A tenants.
तो ऐसा नहीं आपको जाके रेंट कलेक्ट करना है या कुछ एसेट आपका टूट रहा है. So managed very professionally. Already 3 REITs related to shopping mall data centers listed है. So you have Embassy, Mindspace and Brookfield. Nexus was a new retail shopping mall focused REIT that just listed a few months back. मैं इस पे और स्टडी करूंगा दोस्तों और एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा REITs पे. चलो आगे बढ़ते हैं. Okay, so we've discussed what not to do. So then the case comes, why equity? So again, this is not the asset class of choice which we said we're going to go jump right in. We've actually arrived at equities through elimination. So the first thing is liquidity. I think it's probably the most liquid market that you can see amongst all the other asset classes. In fact, today I think T+1 settlement is actually the fastest in the world in any capital market. In fact, SEBI is actually now proposing for instant settlements कि आप buy करो, आप sell करोगे, the money will come into your account instantly. So let's see how that pans out, right? Second is the taxation structure. So there's actually a big incentive from the government of India as well for you to hold equities for long term. The short term capital gains tax are at 15%. The long term is at 10%. In fact, the time frame for your taxation is actually 1 year. So even like the government from a regulatory perspective is encouraging you to at least hold equities for a year. कि आप ये 1 साल में नहीं बेच के 1 साल के बाद बेच लो, हम आपसे टैक्स 33% कम लेंगे, राइट? तो इवन फ्रॉम अ रेगुलेटरी साइड देयर इज अ पुश कि यू थिंक लॉन्ग टर्म. एंड रेगुलेशन की बात करें, इट्स डीपली रेगुलेटेड and meticulously standardized. And what do I mean by this? So any company which is today listed on equity markets, they have to go through a fair degree of compliance. चाहे वो disclosures की बात हो, चाहे उनके अर्निंग्स जो वो रिपोर्ट कर रहे हैं, या बिजनेस में अगर कुछ मटेरियल चेंज भी हो रहा है, दे हैव टू एंश्योर दैट एज अ इन्वेस्टर यू नो. नाउ आई डोंट थिंक दैट्स प्रॉब्ली द केस विद एनी अदर इन्वेस्टमेंट एसेट क्लास वेयर if Uday Kotak is stepping down from his bank, he is telling you that, hey, I'm stepping down. I mean, he doesn't need to tell you, right? But because regulations tell him to do it for any material event for that to happen, he has to do it. सही बात है. And finally, the depth. So as we go further into this journey, retail participation obviously is going up. But at the same time, the institutional participation is also going up, as we discussed. Earlier, it used to be just LIC. Today, it's EPFO, NPS. And maybe in the next 5-10 years, we'll see more serious domestic money flowing into equities. So that's basically why we make a case for equity. सही है. एक तो मैं पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ इसमें कि ये जो रियल टाइम सेटलमेंट ये जो चल रहा है, इसमें मैं अपना ओपिनियन देना चाहता हूँ. व्हाट आई अंडरस्टैंड क्या होने वाला है. तो अगर आप देखो ये सेटलमेंट साइकिल कम होता जा रहा है, तो अभी T+1 है, इसका मतलब शेयर आपको नेक्स्ट डे आ जाता है और पैसा आता है. ये रियल टाइम T+1 आवर तो अभी कर देंगे, 1 आवर तो अभी होने वाला है. Okay. तो इसका मतलब 1 घंटे के अंदर में सेटलमेंट हो जाएगा. ये चल रही है और वो कह रही है रियल टाइम है. आपको पता है इसका जेनेसिस क्या है? मैंने इसको कनेक्ट किया डॉट्स को, ठीक है, और ये शायद फर्स्ट टाइम आई एम टॉकिंग अबाउट दिस. बहुत टाइम पहले एक वाइट पेपर आया था कि हम चाहते हैं, एक्सचेंज चाहता है कि क्लाइंट जो है वो डायरेक्टली एक्सचेंज से कनेक्ट करे. आपको याद है वाइट पेपर? Yes. ये हो गया 3-4 साल हो गए इस बात. NSE direct, no, that was on the exchange. Yeah, exchange से direct. हाँ. तो मैंने इसको कनेक्ट किया. मेरा ओपिनियन है क्या होगा आफ्टर फ्यू मंथ्स और ईयर्स कि अब कस्टमर जो है, एक इन्वेस्टर डायरेक्टली एक्सचेंज में जाके ट्रेड करेगा. ब्रोकर का जो रेलेवेंस है वो रेगुलेटर चाहता है ख़त्म कर दे. स्पेशली अगर प्लेन सिंपल वनीला ट्रांजैक्शन करना है, सपोज आपको लिवरेज नहीं लेना, आपको मार्जिन फैसिलिटी नहीं लेनी है, आपको कोलैटरल नहीं देना शेयर वगैरह के रूप में, आप चाहते हैं कि मेरा बैंक में पैसा पड़ा है, जाके चुपचाप एक्सचेंज में जाके मैं ट्रेड कर लूँ, तो ये रियल टाइम सेटलमेंट एक्चुअली इज़ अ जर्नी टुवर्ड्स दैट. जो UPI ने किया पेमेंट में, सेबी चाहता है कि वो करे ट्रांजैक्शन सेटलमेंट में, कि माल पैसा है बैंक में सीधा जाके, और आप सोचिए उसको UPI के साथ इंटीग्रेट कर देगा, तो आपको करना क्या है? शेयर मैंने लिया, तुरंत बैंक से पैसा गया, शेयर सीधा मेरा CDS से लिया, NSDL में आ गया. दिस इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन. और मैं इसका इंतज़ार किस लिए कर रहा हूँ? क्योंकि स्टॉकेज को हम सीधा एक्सचेंज से इंटीग्रेट कर देंगे. तो स्टॉकेज में देखो, ट्रेड करो सीधा एक्सचेंज से. ब्रोकर की कोई दरकार नहीं है, सीधा बैंक और डीमैट से इंटीग्रेटेड है. ब्रोकर का कहाँ नीड आएगा? जब आपको डेरिवेटिव ट्रेडिंग करना होगा, क्योंकि वहाँ पर मार्जिनिंग सिस्टम बहुत हेवी होती है. तो जो एक्सचेंज नहीं मैनेज कर सकता, और बीच में
या आपको लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज लेना हो या आपको मार्जिन फैसिलिटी करनी हो, तो इंडिया वहाँ जाने वाला है। और मुझे लगता है ये नेक्स्ट ईयर में हो जाएगा, ये मैडम करके जाएंगे, मुझे लगता है। बाकी लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ठीक है, न्यू इनसाइट। बिल्कुल। कोई लोग बोलते हैं ना कि आप ब्रोकर क्यों नहीं बनना चाहते स्टॉकेज में, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि ब्रोकर क्यों बनूँ मैं। एक तो मुझे डेरिवेटिव में लोगों को खिलाना नहीं है, यू नो, आई एम नॉट इन फेवर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग, सो ब्रोकरेज वहीं से बनती है डेरिवेटिव में खिला के। दूसरा, इवेंचुअली ब्रोकर का रोल बहुत लिमिटेड हो जाएगा फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। द रियल रोल विल बी people who will give right guidance, right data, right analytics where stockage is. Or as you mentioned, the value-added services, The value-added LAS or services. derivatives and Yes. MTF and whatnot. Great. So, अब आते हैं investment process में. So Yeah. now that we've made a case, आपको अपना goal define करना है, आपको अपने savings rate को better करना है, and you've taken stock of your net worth, रिस्क रिवॉर्ड की हमने बात कर ली, तो फाइनली इक्विटीज का जो केस है, सो टिपिकली हाउ डू आई गो अबाउट एन इन्वेस्टमेंट प्रोसेस एंड समथिंग विच इज फेयरली replicatable, right? Yeah. Something which anyone can take this approach and use this, right? लेकिन एक तो थीम भी बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। केस स्टडी। बिल्कुल। अब स्टॉक का नाम लेना है ठीक है, आपके ऊपर है, बड़े थीम बता के जाइएगा, बिकॉज बिल्कुल स्टॉक बिल्कुल। निकलवा लेंगे। So we've covered that as well. Nice. So typically, the investment process that I follow, it typically starts with generating an idea. Then you have some themes, and finally that defines your investable universe. And this can be either way, right? So, for example, and I think we've had a few examples. Okay, so let's say आइडिया जनरेशन कैसे होता है, ये स्लाइड भी बड़ा important था। हाँ। So basically, idea generation for me, and again for someone, I mean, this is fairly again replicatable. Is there are multiple avenues in which you can generate ideas. You just need to keep an eye out. So when I started my investing journey, I read a lot of these foreign authored books. Peter Lynch is someone I read a lot on, and he talks about scuttlebutt a lot. कि आप अपने local grocery store में जा रहे हो, आप देखो वहाँ आसपास सामान क्या है, आप उससे बातें करो। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के बारे में वो जो आपको इनसाइट देगा, वो आपको कोई मैनेजमेंट बुक नहीं दे सकता। बरोबर। तो जैसे पीटर लिंच अपने किताबों में उन्होंने कहा कि उन्हें बॉडी शॉप के बारे में नहीं पता था। इट्स जस्ट दैट ऑन वीकेंड्स व्हेन ही यूज्ड टू गो विद हिज वाइफ टू द मॉल एंड शी यूज्ड टू शॉप products at Body Shop, he then realized that okay, it's a no-brainer business to invest because demand is sticky. The buyer is actually driven by the women in your house, and consumption is very non-discretionary. So he actually identified Body Shop way ahead before Wall Street identified, and he talks about this in his book Scuttlebutt. So you can say somewhere grocery store is one. If you walk around today, if you sit in a room with 5 people, you will see that people today cannot sit for 30 minutes without looking at their phones 25 times. So phones have become very addictive. And what are they doing? They could be consuming content, they could be looking at an app, some news, some reel. It's just mindless consumption of data that's happening. So you can say is also a trend that is there. Now iska what can be the derivatives? अगर मैं आज से 10 साल पहले फ़ोन हार्डली 1 घंटे यूज़ करता था और आज अगर मैं 12 घंटे यूज़ कर रहा हूँ दिन में, there's a high chance that eyewear is something which is now non-discretionary, right? Everyone today wears an eyewear. So then you kind of go a little deeper. Is Lenskart something that is investable? Maybe if Lenskart goes public someday, it's a great buy for me, right? As a business, because the demand drivers are in place and the growth drivers are in place. But value छोड़ता कहाँ है ये लोग? Correct. Valuation की बात है तो खा जाता है लोग। Valuation, keeping valuation aside, as a business, that's something which comes here. So final stage में, so typically when I am looking at an investment or I am looking at a stock idea, the valuations or the financial due diligence is the last step. Okay. So the first step is, or you can say 80 to 90% of the work involves around, is this a business I want to be a part of? Okay. Is this something which can stay profitable in the long term? अब जैसे आपने एक बहुत ही valid risk की point उठाई from the point of view of brokers. कि आज every time Zerodha comes out with its PAT number, everyone gets excited. And every time you will see Nitin Kamath write a post, my business can shut shop one circular away. Correct. Right? And that's a risk that you understand. But a lot of people, they get gung-ho
कि नहीं सिक्योरिटीज बिजनेस है आज, देयर आर लॉट ऑफ लिस्टेड सिक्योरिटीज बिजनेस, IIFL है, ICICI सिक्योरिटीज है. सो लोगों को लगता है कि एक सस्ते पी में ट्रेड कर रहे हैं, इसे तो XYP में होना चाहिए. बट प्रॉब्ली बिकॉज this is a risk which is there, which is why investors are not ready to pay the price to earning multiple that they are ready to pay to some other businesses which are very correlated. Correct. So as a process, I would say let's keep financial due diligence or valuations and all that towards the end. Okay. So the first is understanding the business. So while we can all be very happy about कि हाँ इसमें इतना growth potential है, ये aspirational है, at the same time I am someone who is always be very particular about what the risks are in the business. So while I can say that okay, Lenskart is something which excites me as a business, but what is the risk, right? At this moment, I feel they are trying to do something what Titan did with jewelry, Right. or for that matter, you can say DMart has done with groceries. Right. It's kind of institutionalizing the local chashma wala into a more regulated chain-based play. Although Right. it's not in the listed universe, so again, this discussion goes out. Right. But that typically is how someone should go. So scuttlebutt is one, trends is another. So if data consumption has really taken off in India, who are the beneficiaries of that? So today we see a plethora of content. So who owns the content, right? So IP owners are someone that I'm really excited about. So for example, Saregama as an investment, a music label that I hold is something that I'm really excited about. Because ये एक डिस्क्लेमर है, इनके पास पोजीशन है सारे कामों का, तो ऐसा नहीं कि आप Yeah. उछल के चले जाएं. बिल्कुल. And then talking to fellow investors. So I mean, if I am talking to you, I was talking to members from your team, we came across with new ideas. So I think that process of jamming a lot of times helps in curating new ideas. There could be sectors जो मैं कभी देखा ही नहीं, but because someone told me something about it in a certain way, suddenly it gets more exciting. So that is probably you can say 90% of the source of ideas. And then you look at things that can have 10x changes. जैसे हमने Zomato की बात की, in 8 years they went almost 10x in revenue. But going forward, if I am looking at Zomato as an investment case, I am not very excited about the food delivery business. I mean, वो उन्होंने establish कर लिया कि at a certain unit economics, it's gonna be something that they'll continue to do. But I actually see Zomato 10 years from now, if they really survive, is they becoming a real fintech, because today they have all the restaurant data, something which let's say banks were not very privy to. तो आज अगर एक क्लाउड किचन है या एक रेस्टोरेंट है कैलकाटा में which has 5 outlets, they want to operate a 6th one, they need money or they need working capital loan. There is no stopping Zomato from being the aggregator or the direct sourcing agent for these banks to, let's say, lend to these restaurants and just make fee income on top. Kind of what Alibaba did in China with Alipay and other stuff. So that is something which can be like a 100x outcome for Zomato. Like food delivery jo tha, value banna tha, whatever. But let's see the PAT numbers come in. So once the PAT numbers come in, maybe then I'll be more comfortable investing in it. But ho sakta hai tab tak valuation aur chala jaye. But then again, you can't be in every party in town. So you also need to know what to avoid. So as a rule of thumb, I try and avoid names which are overbought. By overbought, I mean something where valuation is stretched way beyond imagination. And then, people go from price to earnings to EV EBITDA, then price to sales, and then price to impressions, right? So wo metric is not, or wo ek journey hai which, as investors, we should avoid. And we should see what the business profit pool is. तो जैसे मैंने आपको डिजिटल कंजम्पशन की बात की, अब for example, Saregama as a case study, right? So when I saw that, okay, a lot of time is being spent on mobiles, people are spending a good part of their energy always like this. So I actually started looking at some companies which could solve this problem, right? Because I think, ho sakta hai in 10 years, all of us will have some problem with our necks. So pharmaceutical became an area of interest for me. So I started looking at a lot of pharma companies. अब उससे 2-3 आइडियाज और आए. बट देन आई वाज लाइक कि नहीं, इस जर्नी को एक बार पूरा फॉलो थ्रू करते हैं. तो टॉप डाउन में द फर्स्ट अप्रोच वाज, कैन आई गो एंड बाय द पाइप्स, व्हिच इज कैन आई गो एंड बाय द डेटा कंपनीज. सो अगेन रिलायंस इज समथिंग व्हिच आई होल्ड, सो जियो उसके अंदर है. इज भारती एयरटेल अ ग्रेट बाय फॉर मी, राइट? Then I had this view that maybe in India meaningfully ARPU शायद नहीं बढ़े, because data prices is something which
where there is a fair degree of government involvement as well. So, you know, we've seen all this 4G, 5G thing happen. In the past, we've seen spectrum allocation issues happen, but going ahead in the present and the future, I think India has still not reached that stage where everyone has mobile data. आज भी हम बोले कि ठीक है, we are fairly penetrated, लोगों के पास smartphones है, but maybe only 400 to 500 million users use the phone. There's still half of India which is not yet on data or not yet on smartphones. So that way I feel कहीं ना कहीं वो एक gap था. So for me, I thought ठीक है, maybe that's not something I want to invest in. Then what came after that was, where am I spending my time on? So I saw my own app history. It was Instagram, Facebook and WhatsApp. So Meta became a great buy, right? So but again US में listed है. Again उसमें भी fair share of issues हो रहे थे. Apple ने tracking बंद कर दी, तो 30% of their customers suddenly saw कि वो ads नहीं track कर सकते. And that spend was then moving to Google. So then that, and फिर वो लोग Metaverse पे एक bet ले रहे थे, which didn't pay off that well. Now that's also something which we don't know how it plans out. So then that got out, right? Finally, what were you consuming? Are you consuming data? So data में what are you watching? You're watching content, you're watching reels. अब reels में पैसे कौन कमा रहा है? There could be influencers, you know, who've done some brand deals या कोई brand है. But at the end of the day, then I was able to see कि हर reel में एक गाना है जो use हो रहा है. That got me interested into the licensing ecosystem. Okay. कि ये गाना license हो रहा है, whatever. And you know, as you can say, again talking to other investors, this idea of music streaming came. So फिर I was like कि ठीक है, let's look at how the industry has evolved. So then I went top down. From bottom up, you can say, फिर I went top down. So when I was looking at the math of the music industry, 95 में the industry globally was worth almost north of $20 billion, which by 2007 had come to $8-9 billion अच्छा. because of piracy. Okay. And 2007 is when Spotify came. अच्छा. From 2007 to 2023, as we speak, from 7 it again went to $22 billion. Okay. And the driving engine was Spotify. Really? So I was like, then Spotify is the business to own, Yeah. right? So then I went and started looking at their financials. So in 2020, Spotify made close to $8 billion. That's when the whole work started. And they make revenue from two sources, paid subscriptions and ads. Okay. Take a guess what would be the split between paid subscriptions and ads. यार पेड सब्सक्रिप्शन मुझे नहीं पता दुनिया में कैसा है. इंडिया में तो मेरा एक्सपीरियंस बड़ा खराब है. तो 30-35% होगा, 70% प्रॉब्ली ऐड ही होगा. They made 82% from paid subscriptions. क्या बात कर रहा है? And 18% from ads. अरे भैया इंडियंस जाग जाओ, तुम भी सब्सक्राइब किया करो. स्टॉकेज पड़ा है. हम लोग कब तक फ्री में देखते रहेंगे? हाँ ठीक है. And yet they were not profitable. क्या बात कर रहे So I was like, ये पैसा जा कहाँ रहा है? So then when I went deeper in their financials, what I got to know, for every dollar Spotify makes, they pay 70 cents to the music labels. So while Spotify came and changed the game for music, पैसा सारा labels ने कमाया. अरे जबरदस्त. So this was the insight, right? And then that got me, you know, reading and understanding more about what's happening in India, right? तो India में उस समय something very similar was happening. सबके हाथ में जियो था. So streaming had now become convenient. तो हम जो एक songs.pk या ब्लूटूथ से गाने सुनते थे, आज हम सब एक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म में सुन रहे. यू वुड लिसन टू इट ऑन एप्पल, आई लिसन टू इट ऑन स्पॉटिफाई, द हेल्प इन योर हाउस विल लिसन टू इट ऑन यूट्यूब. तो कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म है जो ये गाना चला रही है एंड वो कंटेंट खुद ओन नहीं करती. दे हैव टू लाइसेंस द कंटेंट. सो सडनली द आईपी ओनर्स सॉ दैट देव स्ट्रक अ पॉट ऑफ गोल्ड वेयर पीपल आर कमिंग एवरी डे एंड सेइंग प्लीज आप मुझे अपना कंटेंट दे दो, मैं लाइसेंस कर लेता हूँ, ये हमारी डील है. जनरल लाइसेंस कैसे होती है? सो टिपिकली क्या होता है, कुछ प्लेटफॉर्म्स डू अ फिक्स डील, दे डू अ एमजी, मिनिमम गारंटी हम आपको ओवर अ 2 year पीरियड इतना पे करेंगे बेस्ड ऑन द यूसेज, एंड आफ्टर 2 year द रिन्यूअल्स कम बेस्ड ऑन नेगोशिएशंस एंड व्हाट इज द. तो ये इंस्टाग्राम में इतना रील बनता है, उसमें जो म्यूजिक हम लोग सब ऐड कर पाते हैं आराम से. करेक्ट. तो ये जो म्यूजिक जा रहा है इस पे पैसा बनता है उन लोगों का? लेबल ओनर्स का, because Instagram has to license that content from label owners and they pay a license fee to them. मतलब जितना ये गाना है इंस्टाग्राम में, इन सब पे पैसा बनता है जो गाना बनाया है या जो ओन करता है उस गाने. करेक्ट करेक्ट. एंड अभी तक इंडिया वेरिएबल मॉडल में गया नहीं इन दीज प्लेटफॉर्म्स. अभी तक कुछ प्लेटफॉर्म्स में फिक्स्ड है, कुछ में वेरिएबल है. जैसे यूट्यूब में इट्स फैरली सिंपल, आपके जितने व्यूज है उस हिसाब से आपको एड रेवेन्यू फ्लो होता है. एट द सेम टाइम स्पॉटिफाई में जैसे फिक्स्ड प्लस वेरिएबल है. तो जैसे सारेगामा ने एक इंडस्ट्री फर्स्ट डील की थी इंडिया में जब स्पॉटिफाई आया,
तो उन्होंने क्या किया, पूरा कैटलॉग सारेगामा का अपनी लाइब्रेरी में डाल दिया विदाउट लाइसेंसिंग इट फ्रॉम देम. अच्छा. Then they sued them in court. Then they realized that a library in India is incomplete without Saregama. Then they actually did an industry first deal with them where they said for every stream, I'm gonna make 10 paisa. अच्छा. So this then became a metric कि irrespective आप free हो paid हो 10 पैसा तो मुझे कमाना है आपसे अच्छा. अगर मेरा गाना stream होता है. सही है. And ये economics जब free to paid होती है the numbers change drastically. So that was the whole thesis or the whole genesis. So it started with consumption of data. It went to pipes, it went to healthcare, it went to music streaming, and went to the IP owners. And that's how that whole thing was मतलब कहीं ना कहीं you can say वो triangulation करके वहाँ पे it felt that okay, this is a business that I want to own. अच्छा. उस समय कहीं ना कहीं at the same time if you were मतलब the whole free money era was around 2020 की बात है, तो we were used to seeing multiples of 80, 90, 100, 200 on a lot of tech companies. So I used to think that, okay, this can get a tech company multiple. And as luck would have it, within a year, a lot of things happened with the stock, a lot of investors came in. 200 रुपए का 3000 हो गया था. They did a QIP. हाँ, but मेरी डिस्कवरी 200 में नहीं हुई थी. मेरी डिस्कवरी 1200 में हुई थी. वहाँ से it went to 5500. तो adjusted for split, it was आज के current price के हिसाब से देखें तो entry started at 120, went all the way to 300, 350. ऊपर में 550 भी गया. अभी it's trading at about 360, 370. So it's not that I made a lot of money. I'm kind of like at the same level where I was at. But yes, if things really play out the way I feel the business should do, maybe I can make disproportionate outcomes from that investment. Okay, got it. तो प्रोसेस तो समझ में आ गया. बहुत अच्छा. So जैसे कि आपने कहा कि थीम की बात करना है एंड हाउ डू यू गो अबाउट इट. सो जैसे मैंने इंटरनेट की बात की, कंटेंट, आईवेयर, मोबाइल फोन्स, दोज आर द डेरिवेटिव्स. इन्वेस्टेबल यूनिवर्स में आईपी ओनर्स, फार्मास्यूटिकल्स, राइट? बिकॉज द मोर वी कंज्यूम डेटा, द मोर आवर आईज आर स्ट्रेन्ड. So is mankind pharma a derivative? Maybe, maybe not, right? So that's the way how I would think about it. The other theme that I'm very excited about is credit growth. I feel जैसे हमने बहुत early बात की GDP per capita की. So I think there's a big consumption explosion that's coming, or it's already happening, right? Even people who earn 30,000-40,000 rupees a month, even they want to own an iPhone maybe on credit, right? So I think lending and credit cards is something which is like a structural story, provided you catch the nice lenders who have good lending practices. Because in India, lending money was never an issue. Recovery was always an issue. Kahin na kahin with the India stack and the fact that today you have account aggregator framework implemented, the issue in India was always that you didn't have data to underwrite better credit, at the same time to recover credit. So today I think that problem is solved and anyone can build on top of that layer. So that is a big change that has happened in lending. So for the longest time a lot of people are very skeptical कि देखिए levered business है. आज for any business you look at, you put 100 rupees into the business, you use that 100 rupees and you do whatever you have to. But lending is something where you put 100 and there's a high chance you've actually raised 1000 rupees and you're using 1100 rupees to do your business. So just 10% of your book going bad can just wipe your capital out. Correct. So that way levered business है तो हमेशा एक you can say एक skepticism या risk investors के मन में रहता है. But thanks to a great regulator, thanks to these changes that have happened technologically, I think today we are in a very good place as far as lending growth is concerned. तो मुझे नहीं लगता कि asset quality या recoverability is now a question. It's now about efficiency कि कौन 1% NPA पहले करेगा और कौन 0.1% पहले करेगा. So उस leg में who's gonna grow further. Now this is a space where I have been fairly biased, so I have stick to the leaders, चाहे Bajaj Finance हो या SBI cards हो. Another thing which has taken off really well in the last, you can say 2-3 years when you read articles, is luxury consumption. So on one end you'll see FMCG companies talk about कि रूरल इंडिया में स्ट्रेस है, वेज ग्रोथ नहीं है, तो हमारा शायद अंडरलाइंग ग्रोथ में कुछ चैलेंजेस आए. ऑन द अदर एंड यू हैव companies like Louis Vuitton now saying we want to open the biggest shop in Bombay, or you walk to any high street mall in ground floor, you have these brands like a Gucci or Armani Exchange, and you'll see a lot of times during sales there are queues outside it.
सो कहीं ना कहीं वो जो एक टॉप 1% का नॉन डिस्क्रेशनरी कंजम्पशन है, टॉप एंड ऑफ लग्जरी एंड एवरीवनस एस्पिरेशनल. So उसमें I came across these two derivatives which is again in the listed world, watches and luxury cars. So either you buy a retailer of watches, which is Ethos, that's the potential business that you look at, or a car distributor. So Landmark Cars, again, while people think Mercedes के वो लोग सबसे बड़े distributor है इंडिया में, but they also distribute other brands. So they have Honda, Jeep, etc. So that again is another business. Again, fast food, all of us are always on the move. So QSR chains, supplier to QSR chains. So you have someone like a Devyani International, which owns the master franchisee to KFC, Pizza Hut, as well as a Mrs. Bector's Food that supplies breads or other stuff to chains like a KFC or a Pizza Hut for that matter. Another theme which again, especially when it turns around, it has the potential to create a lot of activity in the economy is real estate. Now, real estate में एक ऐसी चीज़ होती है कि for the longest time, again, India में there have been fair share of issues. We've seen cycles, 2006-07 में commercial lending cycle really blew up. 2008 में, again, when the global economic crisis happened, so a lot of things went off. But कहीं ना कहीं, there's this concept of multiplier effect that if you, so even if we see the government of India trying to front load some of their spending in infrastructure, that actually helps in getting the engine of the economy running. Right. Which is, if you spend 100 rupees on a bridge, you kind of, spend it on cement, spend it on labor, the incomes go up. So kahin na kahin, when real estate as a cycle turns, it really creates disproportionate impact. Correct. So one idea is, can I go and buy the builder? So can I bet on a DLF or a Lodha for that matter? Can I go and buy the derivatives to real estate? So should I go and buy a cement company or a steel company or a building material company? Correct. Or can I buy a housing finance company, which is going to ensure that across the life cycle of the home ownership, it's going to make money. So then you see कि कहाँ कितना profit pool है. You will see for the longest time, maybe steel companies at some level had a global risk factor. कि steel prices ऊपर नीचे globally हो रहे हैं. आपकी खुद की माइंस है कि नहीं है as far as your ores are concerned, and accordingly there are challenges for them to be structurally profitable over a 10-year period. So that data probably does not give me the comfort to look at them. But someone who's caught the cycle really well can make disproportionate outcomes. अब Tata Steel पिछले 10 साल का अगर हम उसका पैट देखें, it was roughly 34,000-35,000 crores, and in 1 year it made 40,000 crores. So someone who understands this cycle well can have disproportionate outcomes. But as someone who's taking a 10-year view, maybe that's not a stock that I would want to own. सही. But I would be more comfortable, let's say, with a HDFC Bank. सही. So that typically is what I would say, how you go from theme to derivatives to investable universe and then the company. Awesome. So if your due diligence is good, where I feel 99% of the work is there, it helps you that, you know what your worst case scenario is. So what happens is, because for the past 3 years, we've only seen markets go one way, I'll just keep repeating it. So obviously at some point, things might turn for factors which are not in your control. You can own the best businesses that are out there, and still you can see, prices correct 30, 40, 50, maybe even 60%. That's what equities do. Sometimes they are very ruthless when they fall. So at that point, if you know what assets you own, and if you've really done the work, you will not press sell, which I think is very important. सही बात. I remember, back in COVID, my dad called me. He said, this was something which he had also never seen in his life, and he said, "What's happening?" So at that point, the only thing that I could say that, if we don't have the confidence to put money and deploy, let's not sell anything, right? Let's things normalize. It's not that things are going to end. Although there was a great fear in people that things are going to end. But at some level, we saw how the recovery came, right? It just was one way. But a lot of times, those recoveries also don't come in one way. So the point is, if your due diligence is done well, if you know what businesses you own, and at some point, if you've understood what the worst case scenarios is, in down days or in days when things or markets fall, you will not panic, which I think is very important psychologically, especially if you have a large allocation in equities. सही बात. So while we can talk and deliberate a lot on कि हाँ, equities is the asset class for you,
and which is why I wanted to harp a lot on the risks. At the same time, on bad days, your due diligence or your knowledge about things is gonna give you the confidence. So that is very important, right? Sure. So as I said, the typical process is you understand what the business model is. You can do some checks, understand what the promoter background is. If there's a promoter who's run a pipe business for 20 years and suddenly it wants to get into real estate, maybe that's not a business I want to be in, right? So कहीं ना कहीं वो core competency understand करना important है. अब जैसे एज अ केस स्टडी अगर हम APL अपोलो की बात करें, they've done really well structurally. They've created a niche in structural steel pipes. अब from within that company, they've now spun off a NBFC, which is SG Finserv. But the model that SG Finserv follows is it does channel financing for distributors of APL Apollo. So that's a business which I think is a good adjacency for their main business. That's a spin-off that as an investor I would not get very uncomfortable with. But अगर कल कोई बोले कि नहीं मैं एक luxury real estate में पैसे डाल रहा हूँ, then I might press the button that day and exit, right? So that's something which as investors we should know. Third is the cyclicality of business. As I said, my first mistake was investing in a cyclical business at its peak. So for me, you can also say that this is a bias which is very hard built. So I will probably never look at a cyclical business unless something very meaningfully is changing. Okay. Financial due diligence, again, there are a lot of metrics that one can track. Sales growth aa rahi hai ki nahi aa rahi hai? Is the company really making money? Like these are the two basic checks that you do. And then finally you see, does the company need further money to grow, or do they continue to need to raise debt or external financing? तो आज हम जितनी new age businesses की बात करें, a large part of their spends go in marketing or in burning money to acquire customers, and they talk about customer acquisition cost, something we also covered in the Info Edge video. But अगर एक stable business है, जैसे हमने ITC की बात की, ITC doesn't need further capital to grow. They have that base or they have that balance sheet strength कि वो आज 4 नए businesses चालू कर सकते हैं. So that gives you another level of comfort when you're looking at a stock. अच्छा, फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस के लिए आई थिंक कौशिक मोहन का जो फेस टू फेस है ना, वो सबको देखना चाहिए कि बियॉन्ड नंबर्स और क्या देख सकते हैं जस्ट बाय ट्विस्टिंग सम नंबर्स. Right. Again, valuations, you can look at historic valuations, you can look at industry valuations, and then you look at current multiples. So अगर कोई कंपनी let's say 10-12 PE में हमेशा ट्रेड की है, आज अगर 5 PE में ट्रेड कर रही है, is it undervalued? I mean, the answer from the book is yes, but why is it undervalued? Is there something which has really changed? Has the business model changed? ऐसा हो सकता है कि कंपनी ने सडनली बहुत सारा डेट रेज कर लिया हो. So is there a path for them to pay down the debt? अगर है तो great, then you can then make disproportionate outcomes. If not, let it be. A lot of times this gets important because I think कहीं ना कहीं ये आपको एक सेंस देता है कि पूरा इंडस्ट्री अगर लेट्स से 30 टाइम्स में ट्रेड कर रहा है, व्हाट मेक्स यू सो स्पेशल दैट आप 100 टाइम्स में ट्रेड कर रहे हो, या व्हाट मेक्स यू सो बैड कि आप 10 टाइम्स में ट्रेड कर रहे हो. तो वहाँ पे यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ आंसर्स. In one of the sessions for Stockage Club, we had done a case study where we compared Page, Lux, Rupa and Dollar. Yeah. And the answer that we got was that the reinvestment return that Page makes it disproportionately ahead of all these other 3 players, which is why the market gives it a PE that it gives. And finally, assuming or assessing worst case scenarios, which I think if you stress test a few numbers कि अगर कंपनी कल को अगर इतना डेट रेज कर दी है तो is the profit enough for them to pay the interest out? Or let's say if suddenly the sales growth vanishes for 2 years, does the company have adequate reserves to run the show? So I think some of these basic checks can also help you avoid not making a bad pick. See, making a good pick, I think some of it has to do with luck. Yeah. Because I could pick 100 stocks and there's a high chance none of them run. It's also a case that I could just randomly pick 20 stocks and all of them run. Yeah. तो कहीं ना कहीं understanding the worst case outcomes is more important, क्योंकि best case तो market को छोड़ देते हैं, कहीं ना कहीं left right it's gonna do what it does. So picking the right pick is quite an extent luck also. Absolutely. And, not picking the wrong ones is skill. Is yeah. I think that's 99%
odds है वहाँ पे, हाँ, but making the right pick वहाँ 1% odds है. राइट. So we are trying to assess that 99% अगर सही रहे तो 1% can create disproportionate outcomes for us. So finally, I think to conclude, someone who's just starting off to be the asset manager or becoming the asset manager for their family, I think first you take stock, you get a sense of what your assets and liabilities are, and then you can also calculate your net worth and your liquid net worth. So what do I mean by this? So the house that you live in is an asset, so it's gonna be a part of your net worth. But if you calculate your liquid net worth, maybe you have to remove that house from there. Because the idea is if tomorrow you need that much cash, maybe your house is not going to generate the cash. So that gives you a good sense of where you are at. And then when you sort your basics out, you build an emergency fund. So you take stock what typically is the amount of expenses you need in a month. And it depends on someone's level of comfort. I could have 3 months, I could have 6 months, I could have a year, as and when how much you're comfortable with. So that's like the basic. Term and health insurance is something which all of us should have. Get a good term insurance, get a good health insurance. Today, we have nice platforms. Ditto is doing good work there. I have personally used a platform called Beshak. So they've really helped me sort out my health insurance. I was missold a health insurance, coverage nahi mil raha tha. They really helped me fix it. So that way, these are two things. And if someone has not already done it, I would highly recommend they use these platforms. Get comfortable with equities. Typically to start off, a simple Nifty ETF, 1 or 2 mutual funds, and 1 or 2 stocks that you understand or like. Okay. Right? So say for example, I had a neighbor, she was asking me, she got to know that I'm a fund manager. She's like, which stock should I buy? Someone told me to buy Tata Steel, someone's told me to buy this. I'm like, how often do you shop on Nykaa? I just asked her. She's like, once a week. I said, why don't you buy Nykaa? Right? Now, I think for people to get comfortable with equities, they need to know what they own. Right? So, अगर जो हर हफ्ते Nykaa में शॉप कर रहे हैं, her understanding about Nykaa as a business is probably a little better than her understanding about Tata Steel. तो कहीं ना कहीं, if you have this 1 or 2, I'm not saying you go all out and put like thousands of rupees there. You buy one share, but it's gonna get you a sense of comfort. कहीं ना कहीं, I again go back to my economics professor. I think the first stock that he made me buy was 1 share of Jet Airways. Especially उस समय कुछ Etihad का takeover चल रहा था. He's like, get comfortable. And the whole thrill every day, अरे आज क्या हो रहा है? Is the price going up? Is the price going down? It's not, I would say, an ideal way to do, but it gets you into the game. More of a mental simulation. बिल्कुल. And then उसके बाद you do whatever we've discussed. There are a lot of resources and tools. But that gives you a good sense to get started with equities. Finally, as fourth step, you seek professional advice, you ask questions, understand the risks and rewards. We've done a fair amount of discussion on risks and rewards. And then finally, you set goals and you have targets. So having a vision that, okay, if let's say someone who's, and we are talking about people who could be in their 20s, 30s or 40s. So obviously people are going to work till their 60s or 60 or probably their 70s. But let's say they work till their 60s. So someone who's at 20 has to have a 40-year goal. Someone who's 30 has to have a 30-year goal. And then, there's also a case because today we have access to better healthcare, better medical outcomes. So there's also a sense that in the next 20-25 years, our life expectancies are going to go up. So while we may say that the new retirement age is 60, or there's also a case कि 50 में लोग retire करना चाहते हैं या बाद में retire करना चाहते हैं, I think we could actually live longer. ये प्रॉब्लम है, रिटायर लोगों को पहले करना है, जीना बहुत है. तो करेगा क्या 30 साल? So अब वही बात है, फायर की बात करें, there's this big movement, financial independence, retire early. So I mean, having equities on your side is gonna help you in some way. But at the same time, I think knowing that time-based goals क्या है, defining that target net worth helps you in monitoring the results, which we discussed. I think that's more or less about it. Super. Becoming your own asset manager. बहुत सही है, बहुत सही, मज़ा आया. Lot of things which when I'm conducting these interviews, मेरे को बेसिक्स बहुत लगती है, बट कई बार क्या होता है, बेसिक्स को रिविजिट करने से एक छोटी सी बात समझ में आती है कि यार इसको इस तरह से तो देखा नहीं मैंने. तो वेरी इंटरेस्टिंग, मुझे तो पूरा ये कोर्स लग रहा है.
एंड द वे यू हैव एक्सप्लेन दैट यू हैव कवर्ड एवरीथिंग वाज वेरी गुड यार, मज़ा आया मुझे। कोई क्वेश्चन आप लोग में से? ओह क्वेश्चंस भी है, चलिए क्वेश्चंस ले लेते हैं। और दोस्तों आपके भी क्वेश्चंस होते हो तो आप शर्माएं मत कीजिए, वीडियो के नीचे कमेंट विंडो दिया क्यों है यूट्यूब ने कमेंट, खाली गालियाँ देने के लिए थोड़ी ना होती है, क्वेश्चंस भी देना चाहिए वहाँ पे, ताकि हम फिर इनको पकड़ेंगे, बोलेंगे क्वेश्चंस का आंसर भी दो, क्योंकि हमारे ऑनलाइन लर्नर्स हैं उसको सब आपको दे। चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं इनका। So I have a question related to idea generation. Like you have said, like everybody has a circle of competence. Like Warren Buffett said, कि जैसे आपके पड़ोसी ने बोला कि नायका आप यूज़ करते तो she knows नायका better than anyone else here, right? So वो जो ओवरकम करना है, जैसे आप भी बहुत सारे सेक्टर्स में आप स्टॉक्स इन्वेस्ट करते हो, राइट? बट आपका सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंसी मे बी FMCG होगा, मे बी मेरा ऑटोमोटिव होगा, राइट? तो वो ओवरकम कैसे करना है? लाइक आई नो दीज थीम्स विल गोइंग टू परफॉर्म इन द नियर फ्यूचर, मेरे को समझ में आ रहा है कि क्रेडिट ग्रोथ हो रहा है, बट उसमें मेरा वो कॉम्पिटेंसी नहीं है, मतलब हाउ टू ओवरकम दैट? So I think first step is to understand that it is okay to let go. अब जैसे despite spending a lot of time in a lot of sectors, chemicals is something that I have not understood, and I'm okay with letting chemicals be. अब chemicals में भी there have been tremendous multi-baggers, you know, China plus one, this that. So I think you should start off with what you know. जैसे आपने कहा अगर आपका automobiles में interest है, you can start looking at Tata Motors, you can start looking at derivatives. So you look at a Sona BLW or a Pricol or a SJS. There are multiple names. तो उससे क्या होगा, बिकॉज आपका एक इंटरेस्ट है, आप एक अलग क्यूरियोसिटी लेंस से उसको देखोगे। तो कोई भी एक नया इन्वेस्टर को आप अगर बोलोगे कि टाटा स्टील देखो, अब एक लोहा कंपनी कैसे लोहा बनाता है, इट्स नॉट गोना बी समथिंग विच इज गोना बी एक्साइटिंग फॉर देम। बट समवन हु प्रॉब्ली कम्स फ्रॉम अ फैमिली बैकग्राउंड जिसका स्टील का ट्रेडिंग बिजनेस है, फॉर हिम मे बी he'll have the same interest in Tata Steel rather than maybe like automotive or some other sector. So I think you start with one sector, you complete it, and then you can always move on to next. तो अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आपको क्रेडिट ग्रोथ इंटरेस्टिंग लगता है, आपको एक्साइटिंग लगता है, यू स्टार्ट बाय लुकिंग एट व्हाट बजाज फाइनेंस डज। आप कोई भी क्रोमा में जाओ, कोई भी इन कैलकाटा में यू हैव ग्रेट ईस्टर्न इलेक्ट्रॉनिक्स, यू विल सी देयर इज अ बजाज फाइनेंस गाय सिटिंग देयर। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट गाय? कोई अगर आ रहा है 25,000 का टीवी खरीदने, उसको मैं 50,000 का टीवी कैसे बेचूं? एंड बजाज फाइनेंस इज एनेबलिंग दैट। तो in a way it's actually pushing higher sales for that outlet, right? So then you understand कि ठीक है, there's a big ecosystem of these retailers involved. Then when you go deeper, you'll see even Samsung is directly involved with Bajaj Finance. Samsung actually sets out targets कि Bajaj Finance मेरे लिए कितना मोबाइल बेचेगा, right? या मेरे लिए कितना टीवी बेचेगा। तो when you start asking these questions, that's how you go deeper. So my interest in FMCG also started with my local Kirana store. So when I used to talk, I used to get these insights, why Lay's is always there and Bingo is not there. But let's say when you go to a main road का कोई पान दुकान, you'll always see Bingo is there but Lay's is not there. So then you understand, okay, if ITC is giving cigarettes, they want Bingo to be there, right? And cigarettes is their main cash cow. So then you understand these smaller nuances. So yeah, I mean it's a boring way to do it, but I think it takes time. So that's what I would say. But to start off, I think start with sectors that you like and then move to sectors that you can potentially like. Because sectors तो बहुत सारे हैं, ज़रूरी नहीं आपको सब चीज़ में घुसना है initially. But once you start with 2-3 sectors, you'll understand, okay, this is how I break down things. But when you have the investable universe in your head, like how to choose, like उसमें से like which stocks to pick? Like you said, Bajaj Finance. How did you come to Bajaj Finance is the bet to go, right? Right. So as I said, right, what I liked about Bajaj Finance is their whole customer acquisition engine. I did a very simple comparison. आज अगर आप Amazon या कोई भी बड़ी e-commerce कंपनी को देखो, a large part of their spends goes in discounts, which is it's not marketing spends, it's discounts. कि मैं जितना डिस्काउंट कस्टमर को दूंगा, कस्टमर को एक्वायर करूंगा। तो आज आप एक टीवी अगर Amazon में खरीदते हो, you will buy it for a good price. So Amazon is funding that discount to some extent, ensuring you become their customer. So that's their CAC or the customer acquisition cost. Whereas Bajaj, when they are acquiring a customer, they are making 20% on that. So their customer acquisition engine is actually something which is profitable for them. तो वो तो उससे तो आप एक ऑटो लोन या एक टीवी का लोन लेके आप घुस गए, फिर वो आपको पर्सनल लोन बेचेगा, फिर वो आपको इंश्योरेंस बेचेगा, फिर आपको कार लोन बेचेगा, अभी तो हाउसिंग लोन भी बेच रहे हैं, एंड नाउ देव गॉट इनटू सिक्योरिटीज इज वेल.
So they are saying कि ठीक है, we know we are not competing with the Zerodhas of the world, but आज अगर एक बजाज फाइनेंस का कस्टमर जो मेरे साथ 10 साल रहा है, उसको मैं लैस भी दूंगा, MTF भी दूंगा और इंश्योर करूंगा कि वो मेरे प्लेटफॉर्म में ट्रेड करे. So that's their right to win because they own the customer. That's why I like Bajaj as a business. That doesn't mean Poonawalla FinCorp is a bad business. That doesn't mean that some other NBFC like Chola is a bad business. It's just that I have identified this and I like this very good about them that makes them the top pick amongst others. Someone else who likes vehicle financing, he could probably like Shriram more than Bajaj. The crux is to understand the business model. Which Correct, is correct, absolutely. Right. Thank you, sir. थैंक यू. और एक क्वेश्चन है, आइए एक और क्वेश्चन, बस ये लास्ट क्वेश्चन लेंगे. हाँ भाई, आपका तो पहला ही है तो आप पूछ लीजिए. सर, मेरा क्वेश्चन इन्वेस्टमेंट माइंडसेट पे ऊपर है और साइकोलॉजी पे. बिकॉज हम लोग तो हर एक जानते हैं कि इंडिया इमर्जिंग मार्केट है, हर एक जगह में यही बात होता है. लेकिन रात को हम लोग SGX मतलब डा जोन्स खोल के बैठते हैं. सो क्या है कि हम लोग इन्वेस्ट करते हैं इंडिया में, लेकिन देखते हैं बाहर का दुनिया में क्या चल रहा है. सो ऐसे बोल रहे हैं कि हम इंडिया में ETM में डालता हूँ. अगर ऐसे कोई प्लेटफॉर्म होगा जो NASDAQ 100 में मैं डाल सकता हूँ, तो मेरा क्वेश्चन यही है कि इमर्जिंग मार्केट बोलते कौन सा मार्केट बोल रहे हैं. इंडिया तो मार्केट है, लेकिन एक पैरामीटर होगा ना. मान के चलो कि जापान का मार्केट वो बहुत साल से नहीं चला, अगर मैं वहाँ का अगर कुछ भी ETM में पैसा डालता हूँ तो नहीं ग्रो होता. इंडिया में डालता हूँ तो ग्रो होता है और US मार्केट में भी होता है. तो वो जो कौन सा पैरामीटर है जो इमर्जिंग मार्केट को बोल सकता है कि हाँ यही इमर्जिंग मार्केट है, तो ऐसे कुछ पैरामीटर्स वगैरह है. हाउ डू यू डिफाइन इमर्जिंग मार्केट्स? So I दैट्स think- माय क्वेश्चन. Yeah. No, so typically I think one of the basic parameters of an emerging market is the GDP per capita. So typically, and again, India is a high growth market. So I think from emerging, we are soon gonna move into more like a, जैसे इमर्ज्ड. हाँ, emerged, और जैसे for example, and I know this because there are a few export businesses जिससे मुझे ये insight मिला. पहले क्या होता था, इंडिया से बहुत टेक्सटाइल्स बाइंग होती थी. तो इंडिया का एक टर्म था कि इंडिया इज अ डेवलपिंग नेशन. तो सो देयर वाज दिस MFN स्टेटस, अ मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस. तो उसमें इंडिया, बांग्लादेश एंड वन मोर कंट्री वाज देयर, पाकिस्तान. तो टेक्सटाइल बाइंग तीनों कंट्री से हो रहा था. नाउ इंडिया हैज नाउ समहाउ बीन, मतलब इट्स नाउ अ डेवलप्ड इकोनॉमी. तो वो स्टेटस हट गया. तो वो स्टेटस हट गया, और बिकॉज इन तीनों देशों से सस्ते में माल ले सकते थे, ड्यूटी स्ट्रक्चर कम थी. अब इंडिया पे वो ड्यूटी स्ट्रक्चर ज़्यादा हो गया, तो सडनली टेक्सटाइल बाइंग फ्रॉम इंडिया इज बिकम एक्सपेंसिव. सो नाउ रही बात मार्केट्स की, इमर्जिंग की, तो सी दीज चेंजेस, terminology and these classifications, these continue to happen. But I think it's more to do with what is the view of the country top down. And a lot of times these classifications or these standardizations have no basis. For the longest time, India ka credit rating was actually lower than Greece. It is still there. In fact, isme, Sanjeev Sanyal recently wrote a paper why a lot of these global standards or these global metrics, the basis which is there is not transparent. In fact, India is now doing an exercise to do credit rating of other countries. So I think soon that is going to get published. तो I would say इतना नहीं सोच के, if you are skeptical कि देखो जापान में ऐसा हुआ, वहाँ पैसे नहीं बने, let's try and understand क्यों नहीं बने, right? क्या जापान का structural चीज़ें in Japan were at a similar footing which is there right now in India? क्या उनका करेंसी was managed? क्या उनका फिजिकल डेफिसिट वाज इन ऑर्डर एज लेट्स से व्हाट इज देयर इन इंडिया? तो आई थिंक ऐसे आइसोलेशन में नहीं देख के, इफ यू ऐड 3-4 अदर लेयर्स, देन यू विल हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग. तो इसका मैं एक सिंपल सा आंसर दे देता हूँ कि क्या होता है. ये बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म्स होते हैं ना, गोल्डमैन और लेमैन वगैरह, इनके जो एनालिस्ट है ना, इनको बोला जाता है भगवान. और वो निकालते हैं रिपोर्ट, और वो रिपोर्ट में बोल देते हैं ये ब्रिक्स है, ये इमर्जिंग है. तो हम लोग सबको ही उनकी भाषा बात करने लग जाते हैं. प्रभु ने कोई डिफिनेशन नहीं दिया किसी के लिए, उन्होंने कोई क्लासिफिकेशन नहीं दी है. तो आप ये चीज़ से हट जाइए कि हम इमर्जिंग मार्केट है नहीं. ये सब इन्वेस्टमेंट बैंकर लोग का देनदारी है, अपने को लेना है, अपने लेके बैठ गए. ठीक है, हम अपने इंडिया पे फोकस करें और पैसा बाहर मत भेजिए, और US में तो मत ही इन्वेस्ट करिए.
हमारे देश में इन्वेस्ट करिए, हमारे देश के एंटरप्रेन्योर्स बेस्ट हैं, हम यहीं वेल्थ क्रिएट करेंगे, मिल के करेंगे, ठीक है। बिल्कुल। थोड़ा बहुत डालना है तो इंडिया में ही म्यूचुअल फंड में डाल दीजिएगा जो बाहर इन्वेस्ट कर रखे हैं, जैसे वो पराग पारेख और ये जो नजदीक वाले हैं, थोड़ा मन करे तो कर दीजिएगा। ये जो ऐप है ना, फाइनेंशियल ऐप्स जो आपको बोलते हैं ना यूएस इक्विटी में इन्वेस्ट करो, ये भी मोटा मोटी बाहर वाले ओन करते हैं वीसीज के रूप में। इसके बारे में कभी और वीडियो करेंगे। इंडिया को इंडिया ही रहने दीजिए, देसी ठीक है और देसी चलने दीजिए। बट टॉकिंग अबाउट देसी, थैंक यू फॉर दिस देसी वे ऑफ टीचिंग अस, really loved us, loved this whole process of learning, and I'm sure this video will also become a benchmark video for the youngsters who want to get into that path. Thank you. Thank you. Thanks for hosting me. थैंक यू दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए और लास्ट तक रुकने के लिए। मुझे पता है बहुत कम लोग रुके होंगे क्योंकि लंबा वीडियो था और मुझे आप ही के लिए काम करना है। आई डोंट वांट टू वर्क विद पीपल जो आते हैं 5 मिनट के लिए वीडियो इंटरटेनमेंट ढूंढ के निकल देते हैं। जाइए, वी डोंट वांट एंटरटेनमेंट सीकर, वी वांट सीरियस लर्नर्स। और आप लास्ट तक रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। साकेत हमारे साथ स्टॉकेज क्लब में भी जुड़े हुए हैं, तो आपको और फर्दर लर्निंग चाहिए तो साकेत के साथ स्टॉकेज क्लब में जुड़िए और फर्दर अपनी लर्निंग को आगे बढ़ाइए। थैंक यू, मिलते हैं बहुत जल्द। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद। Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.